सर गए थे, तो मैं प्रदीप सर से भी बहुत स्नेह करती हूँ, तो मैंने उनसे कहा था कि वो एक बार आकर यहाँ पर अपनी मेमोरीज और अपनी लर्निंग को शेयर करें, और सर ने सहज स्वीकार किया था। मैंने उनकी वाणी से उनकी टीचिंग्स को याद कराकर सर ने हम लोग को वाकई बहुत मोटिवेट किया, और जो लोग नए जुड़े हैं उनके सामने पत्री सर को बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट किया कि जैसे सब लोग मान रहे हैं पत्री सर को ईश्वर, वो ईश्वर है, पर वो हमारे बीच में एक एनलाइटेड मास्टर, एक गुरु के रूप में आए हैं। तो उनके ऊपर अंधभक्त नहीं हमें करना है, पर उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना है। तो जब आप लोगों के इतने प्यारे फीडबैक मिले, और मैंने सर को थोड़े से ही मैंने भेजे थे, पूरे भी नहीं भेजे, कुछ एक भेजे थे, तो सर ने आज मुझे फोन किया और मुझसे पूछा कि कैसे सब लोगों को बहुत अच्छा लगा क्या। मैंने कहा सर आपने बहुत लोगों को सहारा भी दिया कि इस मोमेंट पे हम अपने सर के सिर्फ बॉडी से अटैच नहीं रहे, और साथ ही साथ आपने उनको एक एनलाइटेड मास्टर्स के रूप में जो बताए हैं वो बहुत बहुत प्रीशियस हैं, और इस समय मच नीडेड थे हमारे लिए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज है, जैसे मैंने कल सेशन के बीच में भी कहा था कि आपके मेमोरीज और लर्निंग से एक सेशन के लायक नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी उनकी 14 साल की। तो आज उन्होंने हमारे ज्ञान भारत के प्यार के कारण फिर से आना मंजूर किया है, जबकि वो हमेशा फॉरेनर्स लोगों के रिट्रीट और उनके वर्कशॉप में बिजी रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा, आप लोगों को मैसेज भेजा था कि जितना हो सके आप लोग जूम में जुड़िए, उनकी एनर्जी को फील करिए और पत्री सर की टीचिंग को एब्सॉर्ब करिए। आज अमावस्या है, पूर्णिमा और अमावस्या में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो इस समय जितना ज्यादा हो सके ध्यान करना चाहिए। बच्चों की आज सर के एक्सपीरियंस शेयरिंग है, तो सिर्फ हम 45 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे। बाकी रात के समय में आप लोग जरूर मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करिएगा। तो अपने आप को तैयार कर ले फ्रेंड्स। कमरे की रोशनी मध्यम कर सुखासन में बैठ जाएं, उंगलियों को आपस में क्रॉस कर ले, पैरों को भी क्रॉस कर ले, और आंखों को आहिस्ता बंद कर अपनी आती और जाती श्वास के साथ एक हो जाए। ये 45 मिनट सिर्फ हम और हमारी श्वास।
30 seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर ले जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों को आहिस्ता आहिस्ता एक प्यारी सी मुस्कान के साथ खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। आज अमावस्या की एनर्जी आप सभी लोगों ने फील किए होंगे, तो थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ प्रदीप सर भी जुड़ गए हैं, तो आज हम उनसे और उनकी धरोहर में जो भी उनकी मेमोरीज और लर्निंग है और सुनेंगे। वेलकम, वेलकम, वेलकम सर। वेलकम टू ज्ञान भारत। नमस्कार, सब लोगों को नमस्कार। So yesterday I shared about my learnings and my journey with PSSM and with Patriji sir. Felt like there is something incomplete. I can share more. And this morning I felt like by sharing my teachings, by sharing my experience, my learnings from Patriji sir, actually that is the way I honor him. So I was guided to continue to today. So let us go into this journey, my journey, where I'm visually taking you. But I'll be sharing something which is profound. You know, there are so many, and there are some which means to me, but there are some which I can share. So just go with the flow. Whatever I feel is appropriate, I'll share. Nice memories. Yes, ma'am. तो फ्रेंड्स, सर कह रहे हैं कि कल जब मैं अपनी उस धरोहर में से खूब सारी यादें और टीचिंग शेयर किया, तब भी मुझे लगा कि मैंने कुछ अधूरा छोड़ रहा हूँ। तो आज मैं फिर से आप लोग के पास आया हूँ अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए कि जो भी मैंने सीखा है। मेमोरीज बहुत है, हर एक को मैं बखान नहीं कर सकता, आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकता, पर मैं बहुत जो गहरी टीचिंग्स है उनको मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा और आप उसको विजुअली एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो चलिए हम बहते हैं अपनी पुरानी यादों के साथ। So the day I met him, the first day I met him was September 10, 2008. So I met him, I was asking questions after questions. And I learned quite a bit in that. So some of the few things are, the first question I asked him was, why did I come to you? What greatness you have? You tell me, I want to listen from you. So he said, your intent brought you here. We both are of the same frequency. So frequency attracts frequency. That was my very first question. And the very first question I asked Patriji sir was that, why did I come and meet you? Because in my entire life, I never met anybody. I never went to any gurus, or I never went to any well-known personalities. I never went to anybody to meet. So he is the first person I went. So he said, your intent brought you here.
Your frequency matches my frequency. So we both met. Then I asked him, so is everything predestined? Is our meeting on this day, on this time, is also predestined? He said, yes, absolutely yes. We are meant to meet. And then I kept on asking other questions. Tell me about success and failure. Because I met Patri sir in September 2008, but I started my intense meditation in July. So July, August, September, for about 2.5 months, I was doing very intense meditation. So based on my experiences in meditation, I was testing him. And the people around me, they were thinking that I was a failure because instead of going to job, I was focusing full time on meditation, doing 8 hours, 10 hours per day. So everybody thought I'm a failure. But for me, I'm the most successful person because I started discovering myself. So what people call it as a failure is not a failure for me. It's success. And when I see people with a lot of money, name and fame, I see them as a failure because they don't know themselves. Zero knowledge about themselves. They are blind. So I see they are a failure. So then I asked Patri sir, what is this failure? Give me the definition of failure and success. What is failure and success for you? You tell me your definition. Then he said, success is pregnant with materialistic gains. If you are successful, then you will get a lot of material gains. It is pregnant. By default, every success brings you a lot of materialistic gains. But failure is pregnant with spiritual gains. Every time a person goes through a failure, the spiritual quest is pregnant inside because he starts questioning why it happened to me, why. So that's a spiritual gain. So I was like, wow, okay, good. Nice, makes sense. So then went on and on and on and on with many, many questions. And finally, some of the important questions, I spent half a day. Then I said, I'm very happy today to meet you. And this is one of my most happiest days because I was doing Sajjana Sangatya, continuous Sajjana Sangatya, one-on-one question and answers for about 4 or 5 hours. So I said, this day I'm very happy, but I want to be happy every single moment like this. So what should I do? Then you said, you have to do 3 things. First, every day you meditate. Then every day you read books. And every day you do Sajjana Sangatya. If you do these 3 things every day, then you will be happy ever after. Your life will be happy. So, okay, great. I will experiment. So I have catch hold of that, of doing meditation every day and reading books every day and Sajjana Sangatya. Sajjana Sangatya, in those days in Australia, there were not many people who were meditating. And I don't know much people in India, the PSSM and all those things. I don't know. So yes, Swadhyaya and meditation I was doing. But instead of Sajjana Sangatya, I used to listen to a lot of other masters. I used to listen to Osho. And in those days, there used to be a radio station. And the radio station, there were some pyramid masters, they were relaying Patri sir's audios in the radio, internet radio. So I was listening to that. It was in Telugu language. There was very few in English. It was in Telugu. So I used to listen to that. So it started with a bang. My experience with him was started with a bang. And I read somewhere that a real truth seeker always test the master. He will never blindly accept anybody as a master. He will always test the master. See, normally the teachers will test the student, right? Normally the gurus will test the disciple whether he is ready for enlightenment. But a real truth seeker will test the guru whether the guru is eligible to be a guru. So in this lifetime, the very first experience was started with a bang. Like
let me test you, and he's like, okay, let me test how you are. So we both were testing each other. And after 4 or 5 hours, I said, okay, now my questions are finished. Do you have any questions to ask me? Or you have anything to tell? Now it's your turn, you ask. Then he looked at me, smiled at me, and he said, I'm happy you have come to the right place. I'm very happy you have come to the right place. So from there, that was the beginning of our journey between me and Patri sir. So from that day onwards, it was a very beautiful friendship, senior-junior relationship. Yes, madam. You're on the mute, madam. तो सर अपनी जर्नी बता रहे हैं कि 10 सितंबर 2008 को मैं उनसे जब पहली बार मिला था, 2.5 महीने पहले से ही मैं मेडिटेशन कर रहा था, जुलाई से। और 10 सितंबर को जब मैं पहली बार उनसे मिला, तो मैंने पहला ही क्वेश्चन उनसे पूछा कि आप में ऐसा क्या है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, क्योंकि उसके पहले तक प्रदीप सर किसी भी गुरु या किसी भी ऐसे व्यक्तित्व लोगों से मिलने के लिए नहीं गए थे। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था, और सर ने कहा कि ये तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हारे संकल्प था, इसलिए तुम मेरे पास आए हो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट फ्रीक्वेंसी, अर्थात मेरे फ्रीक्वेंसी के बराबर ही हो, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। फिर क्या मैंने उनसे पूछा कि क्या हम दोनों का मिलना पूर्व निर्धारित था? तो पत्री सर ने कहा बिल्कुल, तुम्हें मुझसे मिलना ही था। मैं चूंकि 2.5 महीने से मेडिटेशन कर रहा था, मुझे जॉब में अच्छा नहीं लगता था और लोग मुझे फेलवर समझते थे, क्योंकि मैं 10-10 घंटे मेडिटेशन करता था। जबकि मैं लोगों को देखता था तो मुझे लगता था कि वो लोग अपनी जिंदगी में फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो पीछे मटेरियलिस्टिक चीजों के, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरे अंदर एक क्वेश्चन था कि सफलता और असफलता क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है इन दोनों में फर्क, सफलता और असफलता में। तो पत्री सर ने कहा कि सफलता वो चीज है जिसमें आपको मटेरियलिस्टिक चीजें, पैसों, उन सब का सारा गर्व मिलता है, और फेलवर वो है, मतलब असफलता वो है जिससे आपको आध्यात्मिक प्यास जगती है। तो मुझे ये आंसर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपनी खोज कर रहा था, तो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं फेलवर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। फिर फाइनली जब हमारा सज्जन सांगत्य पूरा खत्म हो गया, तो मैंने उनसे पूछा कि 24 घंटे कैसे खुश रहा जाए, 7 दिन 24 घंटे कैसे खुश रहा जाए। तो पत्री सर ने कहा कि रोज ध्यान करो, रोज सज्जन सांगत्य करो, और रोज अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो। मैंने वही किया, मेडिटेशन किया, स्वाध्याय किया। पर चूंकि ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स नहीं थे, तो इसलिए मुझे सज्जन सांगत्य में कठिनाई होती थी। मैं ओशो को सुनता था, और एक रेडियो स्टेशन में पत्री सर के तेलुगु ऑडियोज उनके फॉलोअर ब्रॉडकास्ट करते थे, उनको भी मैं सुनता था। तो इस तरीके से मेरा सामना जो पत्री सर के साथ पहली बार हुआ था, वो एक मुठभेड़ की तरीके से था, एक बैंड की तरीके से था। ट्रूथ सीकर हमेशा अपने गुरु को चेक करता है कि क्या मैं उस गुरु से शिक्षा ले पाऊंगा, उससे कुछ सीख पाऊंगा, जबकि गुरु अक्सर शिष्यों को चेक करते हैं कि वो क्या एनलाइटमेंट के योग्य हैं या नहीं। पर ट्रूथ सीकर हमेशा गुरु को ही देखता है कि मैं उससे सीख पाऊंगा कि नहीं। तो 4-5 घंटे के बाद हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए, और सर ने मुझे मैंने सर से कहा कि आपको जो पूछना है मुझसे पूछो। तो पत्री सर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं एक सही जगह आ गया हूँ। तो इस तरीके हमारी पहली मुलाकात हुई, और हम दोनों की दोस्ती एक जूनियर और एक सीनियर के रूप में शुरू हो गई। थैंक यू सर। And towards the end of the day, I almost spent the whole day with him, from morning till evening, the whole day. So towards the end of the day, I was going back home. So I told him that I'm indebted to you, because listening to you, listening to your audios, I benefited a lot. Sorry, this was not the first visit. The second time he came,
He came to Australia, he gave some materials, book materials, and then he went to New Zealand. So he taught me the flute, and he gifted me the flute. It was a bit interesting thing, because he was teaching me how to play the notes, the musical notes in the flute, and he asked me to practice it. So he gave the flute and asked me to practice it. And I was like, are you giving it as a gift? He was like, wow, you look like a Khatarnak fellow. No, you wanted my flute only as my gift. No, I am giving you just to practice. I'm going to New Zealand for a week and I'll come back. So you practice for a week and then you have to give it back to me. Say, okay, then will you give back? Sure, you will give back. Say, of course I'll give back. So then say, okay, fine. So then he gave the flute and said, okay, practice. So in that 7 days, a lot of material, whatever he brought from India, his books and teachings and pamphlets. So I was reading all those things, and I was practicing the flute also for the first 7 days. And then, so again, he came back from New Zealand because he was staying in another person's house, one of the masters in Melbourne. So he was staying in their house. So I went after a week to him, and then he looked at me while entering. I said, yes, come, I'm waiting for you. I was thinking whether you will run away with my flute or you will come back. He said, no, sir, I'm here. So then I gave the flute to him. Then he received like this in both hands. Okay, he received. And then said, now I want to gift you. You take it. He gave back. And he said, this is my gift for you. Take it. It was like a bit very heartful moment that, I feel that was the connection when he gave the flute. That was the connection with me, which pulled all along with him in this lifetime. Because somewhere he knew that our journey is going to be a very interesting journey. And after he left, he gave the flute and he left to India. Whenever I'm going through any kind of doubts, because those were my spiritual journey, beginning days of my spiritual journey, whenever I had any doubts or whenever I have any ups and downs, then I always look at the flute and then I remember, oh, that day I was very happy. So all I should do is meditate, read books, then my life will be happy. So again, immediately I'll start meditating, I'll read books, then again, I come up with my energies. So that flute was there. Even now I have kept that flute very carefully. So that flute was there, like the energy, Patrisa's energy was there with me all the time in my intense 2.5 years, because since 2008, I met him 2009. After I met Patrisa, my journey became more intense. I started becoming more sincere, and the intensity and the search, the seeking and the seriousness was 10 times amplified. So all those intense journey I could able to go through is because that one day I had the happiest day in my life I had with him, where all my spiritual the answers were coming from him. So whenever I look at the flute, I feel, yes, I am going to get enlightened. There is no doubt about it. And I used to play the flute whenever I feel low. I used to play the flute and I instantly get the boost. So he like how to describe. Somewhere he knew that flute is going to inspire me. So that's why he gifted me, I guess. And after receiving the flute, before I left him, this is something very important. After I received the flute, I was saying bye-bye to him. Then I told him, I'm very indebted to you. I'm very indebted to you because from you I learned a lot of things and you inspired me a lot. So I'm indebted to you because I learned a lot of concepts from you. Then he looked at me and he said, the word indebted is a very heavy word to use. Then I said, no, sir, I'm really indebted because I learned a lot.
And he said, you see, you remember, whatever you learned is because of your efforts. Whatever you learned is because of your efforts. Even if you feel that you are indebted, the universal laws will wipe away. Because the truth is, nobody can be indebted to nobody. What you deserve, you get it. If you don't deserve, you will never get it in the first place. But whatever you have got, you have deserved it. That's why you got. So you might feel indebted, even though if it is true, the universal laws will wipe away. So you are never indebted to me. So it's like, okay, that was a great eye-opener for me. Patriji sir telling me, you are never indebted to me nor anybody. That was a great moment in my life because I come from a joint family, and my elder uncle supported my education, my foreign education. But later on, I realized that whatever he was doing within our joint family system was not right. He was not doing the fair things. So I went and questioned him, like, you are not doing right with your brothers. You cannot do this. It is not fair. So he created a guilt consciousness within me. He spoke certain words. He said, I am the one who helped you to study, and I am the one who gave you this education. And you got the education from my help, and you are giving me gyan to me. You have grown so big that you are finding fault with me. So those words were really affecting me. It was affecting me because, yes, I'm indebted, because I was feeling like I was indebted to him because he helped my education. But at the same time, I cannot say yes to everything, whatever he says, because sometimes he says wrong, I have to say wrong. So that guilt consciousness was within me. When Patriji sir says, you can never be indebted to anybody, and the universal laws will wipe off. What you deserve, you get it. So those words made my heart felt so light, and I said, I'm not indebted to anybody. I'm a free being. So that was a very powerful moment for me, because we sometimes, especially from Indian families, joint families, a lot of emotional blackmails will happen. And it is very important to understand this truth, that we are never indebted to anybody. Come what may, whatever might be the situation, what we deserve, we get it. And even it appears like we are indebted, the universal laws will wipe it away. What is the universal laws? Law of karma. What you do comes back to you. You got something, that means you deserve it in the first place. Okay, man. बहुत सुंदर बताया सर। सर बता रहे हैं अपनी सेकंड जर्नी के लिए, जब सर ऑस्ट्रेलिया गए थे, पत्री सर ऑस्ट्रेलिया गए थे, और वहां पर उन्होंने इनसे पत्री सर से मिलने गए थे, प्रदीप सर। नहीं, second journey नहीं. The first visit in 2008, he visited Melbourne, and then he was going to New Zealand for a few days and coming back in the same visit. अच्छा, same visit but second day. Yes. Second time I met him after a week after coming. अच्छा, तो 2008 में जो सर सितंबर में मिले थे वहां ऑस्ट्रेलिया में, फिर वहां पर सेकंड टाइम फिर मिलने गए एक हफ्ते के बाद। जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने फ्लूट और नोट्स वगैरह बजाना सिखाया और उनको प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला। तो प्रदीप सर को लगा कि वो फ्लूट उनको गिफ्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये गिफ्ट कर रहे हैं फ्लूट। तो पत्री सर ने हंसी मजाक में कहा कि बाप रे, तुम तो बहुत ही खतरनाक मेरे शिष्य हो, मैंने तुमको प्रैक्टिस के लिए क्या दिया, तुम तो मेरे फ्लूट को ही लेना चाह रहे हो। मैं एक हफ्ते के लिए न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, मैं जब वापस आऊंगा तो ये मुझे दे देना, और तुम सही में दोगे कि नहीं मुझे वापस, हंसकर वो बोले। और फिर पत्री सर एक हफ्ते के लिए न्यूजीलैंड चले गए। 7 दिन के बाद आए, और उनके जाने के पहले उन्होंने मुझे कुछ पैम्पलेट और टीचिंग की बुक्स वगैरह भी कुछ देके गए थे। फ्लूट तो थी ही, और भी कुछ और चीजें देके गए थे। न्यूजीलैंड से वापस जब आए तो किसी मास्टर के घर में रहते थे, वहां मैं फिर मिलने गया, तो वो मेरा वेट कर रहे थे।
और मुझसे बोलने लगे कि हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, मुझे लगा कहीं तुम फ्लूट लेके भाग तो नहीं जाओगे। और जैसे मैंने उनको फ्लूट दिया तो उन्होंने दोनों हाथ से लिया और ओके कहा, और फिर वो मुझे फ्लूट वापस दे दिए हमेशा के लिए, और उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसे संभाल कर रखो। वो मेरे लिए बहुत ही हार्टफुल मोमेंट था, बहुत ही हृदय को खुश करने वाला मोमेंट था, क्योंकि उस फ्लूट के माध्यम से मेरा और पत्री सर का जन्म जन्म का ये पूरा एक फ्रेंडशिप का नाता बन गया था। सारी जिंदगी मुझे उन्होंने बांध कर रखा। कभी भी मुझे डाउट होता था या मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आता था, क्योंकि उस समय प्रदीप सर शुरुआत के दिन थे उनके मेडिटेशन के, तो कभी भी कहते हैं कि कभी भी मुझे डाउट होता था या अप एंड डाउन आता था तो मैं फ्लूट को देखता था कि उस दिन मैं कितना खुश था और पत्री सर ने मुझे कितनी प्यारी गिफ्ट दी है। ये सोच के मैं अपने आप को मोटिवेट करता, बुक्स पढ़ता, मेडिटेशन करता और उस अप्स एंड डाउन से बाहर निकल जाता। वो फ्लूट मेरे लिए पत्री सर की एक एनर्जी है, और क्योंकि मेरे को 2008 में सर ने दी थी, उसके बाद ही मेरी असली खोज, असली प्यास और असली लर्निंग शुरू हुई थी। ऐसा लगता था कि मैं उन्हीं के साथ हूँ, और उस फ्लूट को देख के मुझे लगता था कि हाँ मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा, और फ्लूट को देखते ही मैं शिखर पर, खुशी के शिखर पे पहुंच जाता था। शायद वो फ्लूट मुझे इंस्पायर करने के लिए ही सर ने गिफ्ट की थी। और जब वो वापस आ रहे थे इंडिया, तो मैं उनको बाय बाय करने गया और मैंने उनसे कहा कि मैं आपका कर्जदार हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है और बहुत इंस्पायर किया है। तो पत्री सर ने कहा कि कर्जदार शब्द बहुत हैवी वर्ड है, बहुत भारी शब्द है। मैंने कहा नहीं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो पत्री सर ने कहा कि तुम जो भी सीखे हो वो तुम्हारे खुद के प्रयास के कारण है। ट्रुथ किसी का भी नहीं होता, यदि तुम उसको डिजर्व नहीं करते हो तो यूनिवर्स आपके जीवन में से उसको हटा देता है। जब आप डिजर्व करते हो तभी आपको वो चीज मिलती है। तो आप जरूर कह सकते हो कि आपको लग सकता है कि प्रदीप सर को बोल रहे हैं कि आपको लग सकता है कि तुम मेरे कर्जदार हो, पर ये तुम्हारे ही एफर्ट से मिला है। ये शब्द मेरे लिए बहुत ही एनलाइटनिंग के थे, क्योंकि मेरा जो ब्रदर था, वो मेरे कजिन ब्रदर मुझे फॉरेन में पढ़ने की शिक्षा का खर्च उठा रहे थे। my uncle, elder uncle, my father's brother. अच्छा, इनके अंकल जो इनके फॉरेन में रहने के खर्चा उठा रहे थे, वो कभी कभी अपने भाइयों से थोड़ा ऊंच नीच हो जाता था उनका, तो मैं गिल्ट में रहता था और उनको कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि वो जब भी मैं कुछ बोलने की कोशिश करता तो वो मुझसे कहते थे कि मैंने ही तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुमको भेजा हूं कि तुम वापस आके मुझे मदद करोगे, पर तुम तो मुझे ही उल्टा ज्ञान दे रहे हो। तो मैं हमेशा गिल्ट में रहता था, परंतु क्योंकि मैं कर्ज में था उनके पढ़ाई के खर्चे के कारण। पर जब पत्री सर ने ये कहा तो मेरा दिल बहुत हल्का हो गया, मैं बिल्कुल अपने को मुक्त महसूस करने लग गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षण था मेरे लिए, क्योंकि हम जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो कई बार हमको कोई चीज मिलती है या हमें इमोशनली कोई करने के लिए कहा जाता है तो हम अनमने मन से भी करते हैं। तो जो भी परिस्थिति है, जो भी हमें मिलता है, वो सब हमारे को ही यूनिवर्स ने दिया है, और जो भी हम डिजर्व करते हैं वही मिलता है। इसीलिए किसी का भी कर्जदार नहीं रहना है। अगर हमको किसी ने कोई चीज दी है, अगर लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से, सिर्फ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से वो हमें वापस करनी पड़ेगी। No, what you got something because you deserve it, you worked for it in the past lives. So if somebody makes you feel I have done to you this, I have इतना खर्चा किया, इतना मदद किया आपके लिए, so I helped you so much, sometimes you feel very indebted. So yeah, that's the moment you tell yourself, I got it, you spent on me because I deserve it. It's not because of you, it's because of me I got it. सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि यदि कोई आपके लिए कुछ करता है तो हमको लगता है कि अरे हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, हम कर्जदार हो गए। तो नहीं, कभी न कभी हमने उसको कुछ दिया होगा जो हमें वो लौटा रहा है, तो हमको बिल्कुल खुशी खुशी ले लेना चाहिए। So that feeling of indebtedness is very heavy in the heart. You should never have that feeling indebted. But
most of the time, the parents or sometimes the husband, sometimes the wife, they always speak each other that, I have did so much to you, and because of me, you have got so many things and this and that, blah, blah, blah. So actually, if you just this one word is giving you so much freedom that you say, hell with you. I got it because I deserved it. Yes, you have spent money. You have spent money because I deserved it, not because you are great. So that is a very enlightening statement. तो सर ये मैं बोलूंगी ना अपने हस्बैंड को, मेरे को बोलते हैं कि बहुत सेवा करता हूँ मैं तेरी, तो यस पास्ट लाइफ में मैंने किया होगा. नहीं कुछ नहीं, पास्ट लाइफ ये लाइफ अब जरूरत ही नहीं है. Don't get into that question, past life I would have done something. No, simple. I deserve it. I got it. Full stop. बहुत अच्छा सर बता रहे हैं. बहुत दिनों के बाद इतना खुल के हंस रही हूँ सर के कारण. सर कह रहे हैं कि हम पेरेंट्स लोग या अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया. तो सब चीजों को साइड में कर दो, सिर्फ ये बोल दो कि यस मैं इसको डिजर्व करता हूँ, इसीलिए मुझे मिला. बस ये एनलाइटनिंग स्टेटमेंट है, याद रखना. And then see, also I want to tell you another incident in my life. When I was a very small kid, my mother used to, because I was doing some naughty things or I was not doing good in education, I was a little bit take it easy when it comes to homeworks and other things. So she used to compare me with the children on the street, the Dobiwala ka children who don't go to education, who don't go to schools, and poor children. So my mother used to say, do you know the difference between you and those children on the street? The only difference is you got educated parents, well-to-do parents who are able to send you to the school, and those children, they didn't have that kind of parents. That's the only difference between you two. And we are making our efforts to give you education. We are sending you to the school, so you have to do your best. You have to study well and get first rank in the class. So this is how my mother said once, and I used to feel so bad. Is my worth, that's all? Like, you are comparing me with the street children, and you are saying that my life is today like this because you are educated and you are nice parents, and that's why. So I felt so bad and so indebted. Oh, because of my parents only my life is like this, or else I would have been a street child. So I was feeling so indebted, and that feeling was also a very heavy feeling. And after I listened to this statement, I immediately called my mother. I said, you know what? I got these parents because I deserve it. It's not because you did a favor to me. Actually, I did a favor to be born to you as a son. And she was like, oh, I forgot what I said it was many years ago when I was a small child. I said, I totally forgot what I said. Did you got hurt? Is it so? Okay, take it back. So she was also very gentle with me. Sometimes the parents speak something, they compare the children with others, and it becomes a very heavy burden. And with that heavy burden, what happens? You cannot be yourself. You always want to please others. You always want to make sure others are happy because of you. So once for all, I became free from all those burdens. And so that was a great freedom, actually, thanks to Patri sir. If those words haven't come from his mouth, it would have been a very difficult life for me. And on a lighter note, coming back to this flute, many years later, after 2-3 years, when I went to India and met some pyramid masters and went to Pyramid Valley. So when I shared that, Patri sir gave me the flute and he taught me music. Everybody was surprised and stunned. The senior masters, what? Patri sir gave you flute? I said, yeah, what a big deal. They say, he never allows anybody to even touch the flute. If somebody touches his flutes, he will bash them left and right. He will kick them and throw them out. He will never ever let anybody touch the flute. And he has gifted you his own flute? Wow, there should be something. You are something great. Like, kuch greatness nahi hai, what mujhe trap kiya. Flute deke pura spiritual journey mein he is, that I call it as a trap, but it is not a trap.
So it was on a lighter note, I came to know at a much later stage, I came to know that his flute was very, very precious to him, and he never let anybody touch his flute. Yes. सर वो बैग बहुत वो रहती है, उनके दिल के करीब रहती है. जैसे स्टेट से आते हैं ना, तो वेयर इज माय बैग, वेयर इज माय बैग करके वो बिल्कुल वो फ्लूट वाले बैग को ढूंढते हैं. इतना मतलब कंसर्न करते हैं अपने फ्लूट की वो. Yes. No, even his secretaries told me that, he gives the bag, but he doesn't like anybody opening the bag and touching the flute. Only he has to touch the flute, and only he has to keep it back. Yes. If anybody else touches the flute, then they are gone. Yes, I saw, sir. तो सर अपने बचपन की बातें बता रहे हैं कि मैं जब छोटा बच्चा था, मुझे होमवर्क वगैरह भी करना पसंद नहीं था, और मेरी उतना पढ़ाई में मेरी दिलचस्पी नहीं रहती थी. तो जब भी मेरी मम्मी मुझे गरीब बच्चों को, रोड में चलते हुए बच्चों को दिखाती थी, तो मुझे कहती थी कि देखो तुम्हारे में और उन बच्चों में क्या फर्क है. उनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, उनको ऐसी पढ़ाई की फैसिलिटी नहीं देते हैं, पर तुम्हारे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं और आपको हम फैसिलिटी दे रहे हैं अच्छे स्कूल में पढ़ने का, तो ये तुम्हारा फर्ज है कि तुमको फर्स्ट रैंक लाना चाहिए. तब मैं सोचता था क्या मेरी कीमत इतनी ही है? अरे मैं तो बहुत कर्जदार हूं मैं अपने पेरेंट्स का, क्योंकि वो बहुत हैवी वर्ड से कि हमने तुम्हें ये सब दिया और तुमको हम उसके बदले में हमें अच्छे रैंक और अच्छे ग्रेड्स लाके देना है. तो ये वाले वर्ड सुनने के बाद मैं काफी टाइम तक के मेरे मन में वो रहती थी उलझन. पर जब पत्री सर ने मुझे कहा, तो मैंने तुरंत थोड़े दिनों के बाद ही अपनी मदर को फोन करके कहा कि तुमने मुझे बहुत कुछ नहीं दिया, बल्कि मैंने तुम लोगों को अपना पेरेंट्स चुना है. तो उसके वो आश्चर्यचकित रह गए कि मैं उनको ऐसे वर्ड्स क्यों बोल रहा हूँ. तो मैंने पत्री सर की बात बताई और वो नरम से नरम हो गई. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी अपने बच्चों को किसी के साथ भी कंपेयर मत करिए. अगर आप कंपेयर करते हैं तो बच्चे लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी को उलझा देते हैं. आप बिल्कुल जो भी उनको दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं. पत्री सर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये स्टेटमेंट मेरे सारे बर्डन्स को हटा दिया था. कई साल के बाद मैं जब इंडिया आया और पिरामिड मास्टर्स लोगों से मिला, तो जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे पत्री सर ने फ्लूट दिया है और मुझे बजाना भी सिखाया, तो उनको आश्चर्य होता था. तो मुझे लगा कि ऐसा क्या है फ्लूट में जो मुझे देकर उन्होंने बहुत बड़ी चीज कर दी. तब मास्टर्स लोगों ने बताया कि पत्री सर अपनी फ्लूट को किसी को टच भी नहीं करने देते हैं. वो तुमको दिए हैं तो मतलब तुम में कोई विशेष बात होगी. तो मुझे भी लगता है कि कोई विशेष बात तो नहीं, पर हाँ मुझे जाल में फंसा दिया. पर जाल नहीं है, वो उनके एक प्रीशियस गिफ्ट है जो मेरे पास है. So like this, there are many of his, like, when we have this one-to-one discussion with him, there are many times his words have enlightened me and liberated me. So I will share a few of those as we go forward. Once I was like, this was many years later. I also started teaching meditation, and I started understanding how the PSSM works. And it's all decentralized. PSSM is a decentralized organization. Every village, every town has their own society, has their own pyramid building, and everybody's a master for themselves. So, itna politics hota hai. I mean, just to manage a family, it's not so easy. But to manage thousands and thousands of people, and everybody is competing for name and fame, everybody is competing for attention. Itna politics hota hai. And everybody likes Patri sir. And everybody listens to Patri sir. So then I used to, because I also come from a little bit of my management in my master degree. So then I say, okay, I just want to ask him. He's having a secret. Maybe I should ask him. So one day, it was, I think, in the year 2014 or maybe 2014-13. So we both were in the Botanic Gardens in Singapore. I organized a program for him. See, by the time I also started teaching, I also started traveling around the world. But wherever I go, I teach. First, I prepare the ground. I make sure there are some students
And then I invite Patri sir to come to that country. So we were doing a program in Singapore Botanic Gardens, and the program was about to start another. We still have 45 minutes left because we came early to the venue. So he said, okay, chalo garden mein ek walk karte hain. So there was a pura team there looking. I said, no, you come. So we both were walking in the garden, slowly walking, touching the feet, touching the grass. And then after a while said, can we sit there on the lawn? I said, okay, yes, sir, let us sit. So he was sitting in the lawn and he was looking at me and I was looking at him. I said, okay, this is the best chance to ask him. He was in a very nice, good mood. So it's full of nature. So let me ask this question. So I said, sir, I want to ask you a question. And yes, he said, go ahead. See, in a company, in a companies or in any factories, the boss gives the instructions and the employees will listen because they're getting the salary, money, they're giving the money, and so that they listen to the instructions. But you don't have any money, you don't have a single penny with you, and you manage so many trusts, Hyderabad Trust, Bangalore Trust, and this, so whatnot. There are hundreds and hundreds of trusts in Andhra, small towns and villages, and itna politics hota hai isme. And you manage all those things at so much ease, and everybody listens to you, and you manage it so well. I want to be like you. I want to be like you. I want to be a good manager where everybody listens to me. So what is the secret? Aaj aap batana padega. Then he looked at me and said, you really want to know? Yes, sir, I really want to know. You have to tell me. You have to tell me what is the secret. What secret is it? I said, okay, I'll tell you today. So he said, with anybody I meet, any person I meet, I see only the beauty in them. I will not see any negativity. That negativity doesn't appear in my eyes. Only the beauty appears in my eyes. And when I recognize that beauty, and when I see that beauty, that person becomes very happy because I have recognized his beauty. See, we all have some positive, some negative. Everybody has some positive, negative. But I always see the beauty. From a grass blade to a highly enlightened person, from a living thing to a non-living thing, in anything and everything, I see only the beauty. So when I see the beauty, that person comes into my fold, and he wants to follow me. He wants to listen to me because I have recognized his beauty. So that is my secret. Yes, ma'am. बहुत सुंदर बता रहे हैं सर। कई साल पहले की और एक घटना बता रहे हैं, जब वो तब तक के प्रदीप सर ने मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दिया था, कई कंट्रीज में भी जाके सिखाते थे। और मैं देखता था कि पत्री सर की बहुत सारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत सारे मास्टर्स हैं और अलग अलग सेंटर्स हैं। जब एक छोटे से परिवार में भी इतना पॉलिटिक्स चलता है, तो इतना बड़ा, जहाँ पे हजारों लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनके लिए काम करते हैं, वो कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा रहता था। जब भी मैं किसी कंट्री में जाता था, वहां पे पहले बैकग्राउंड बनाता था, वहां क्लासेस वगैरह करके वहां की एनर्जी बढ़ा के फिर मैं पत्री सर के लिए एक क्लास ऑर्गेनाइज करता था और पत्री सर को इनवाइट करता था। ऐसे ही मैंने सिंगापुर में एक उनकी क्लास का आयोजन किया था और 2013-2014 में पत्री सर मेरे पास आए। तो हम वेन्यू में 45 मिनट पहले पहुंच गए थे। तो सारी टीम को छोड़कर सर ने मुझे कहा कि चलो हम थोड़ा घूम के आते हैं। हम पैदल चल रहे थे और वहां ग्रास थी और उन्होंने कहा चलो लॉन में बैठ जाते हैं। हम दोनों लॉन में बैठ के एक दूसरे को देख रहे थे। सर बहुत अच्छे मूड में थे, आसपास नेचर था। मुझे लगा कि मैं जो मन में एक क्वेश्चन है वो मैं आज ही पूछ लेता हूँ। तो मैंने सर से कहा कि मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सर ने कहा यस। तो फिर मैंने कहा कि सर, जब एक कंपनी और एक फैक्ट्री का मालिक अपने सारे एम्प्लॉयर्स लोगों को निर्देश देता है, तो चूंकि उनकी सैलरी भी दे रहा है तो सारे लोग उसकी बातें सुनेंगे ही और कहना मानेंगे भी। पर आपके पास तो पैसा नहीं है और आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इतने सारे ट्रस्ट हैं, इतनी पॉलिटिक्स के बीच में
सब लोग आपका कहना मानते हैं, सुनते हैं, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? मैं भी आपके समानी एक मैनेजर बनना चाहता हूँ। तो प्रदीप सर ने मेरी आंखों में देखकर कहा कि क्या तुम सही में इसको जानना चाहते हो? तो मैंने कहा बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि मैं जिससे भी मिलता हूँ, जो भी व्यक्ति से मिलता हूँ, तो मैं उसके अंदर सुंदरता देखता हूँ। हर एक व्यक्ति में पॉजिटिविटी, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही चीजें होती हैं, पर मैं नकारात्मक चीजों को नहीं देखता, सिर्फ सकारात्मक चीजों को ही देखता हूँ, उसकी ब्यूटी को देखता हूँ और उसको स्वीकार करता हूँ, उसको एक्नॉलेज करता हूँ, और वो इंसान खुश हो जाता है और वो मेरे कहने पर आ जाता है। जो भी पत्री सर करते थे, जो अपने लिए काम करवाते थे, वो ह्यूमैनिटी के लिए ही था। तो पत्री सर ने कहा कि मैं चाहे वो एक घास का तिनका हो या कोई एक मास्टर हो, जो भी मेरे पास आता है, मैं सिर्फ उसकी ब्यूटी को ही देखता हूँ और उसको एक्नॉलेज करने के द्वारा ही वो मेरे काम को आगे बढ़ाता है। Thank you. And he says he follows me because when I see another person's beauty, he has no other choice other than to follow me. सर कह रहे हैं कि जब मैं उनके में सिर्फ सुंदरता ही देखूंगा तो उस आदमी के पास कोई विकल्प ही नहीं रहेगा, वो मुझे ही अनुसरण करेगा। क्योंकि हर एक कोई जब हमारी अच्छाई को देखता है, हमारी ब्यूटी को देखता है, तो हमें उसके साथ एक कनेक्शन फील होता ही है। Okay. And see, I'm going through certain incidents in my life where I feel it is very important to share, and I'm sharing this. So then many years later, then again, we were in Bosnia. I think it was in the year 2017. We organized an international conference, and there were participants from more than 40 countries. So about 130 participants from more than 45 countries, because it's a conference. Many spiritual masters were there. I was one of the speakers, Patri Sir one of the speakers, and many other Western speakers were there. Mostly Europe or America. So in that public event, you know, the Patri Sir ka style, you know, hamesha vegetarian ka bara mein daarte. So his words, he started scolding the people there. And you know, Europeans, they don't take it lightly. So they started going away out of the place of the conference. They started leaving the room, and not many people were showing interest as he was speaking. Some people started looking at the mobiles and as if nobody was interested. So I felt like a little bad, you know, how come he's such an enlightened master, but very many people are not acknowledging, because it was an international conference. Not most of them don't know who Patri Sir was. So then after his session, it is my session. There was a 10 minutes break, and then it is my session. And my session, they advertised as crystal meditation. So crystal meditation, you know, most of the Westerners, Europeans, Americans, they are very fascinated with the crystal. So the hall was full, you know, the arena was full. Everybody was so eager to see the crystal and so eager to listen what I'm going to say. And yes, I was giving them how to do Ana-Pana-Sati meditation, how to do crystal gazing, and the essence of life, law of karma, blah, blah, blah. 1.5 hours of session, I was speaking, and Patri Sir was also sitting on the stage. So I was feeling so bad that I am teaching his teachings while he is in the stage. And I was feeling little bad. When he was teaching the same thing, people were not interested. And I was teaching the same concept in the way the Westerners can understand, because I understand their psyche. So I was speaking in a more friendly terms, in a little more scientific way, in a gentle way. And so everybody appreciated, and it was a huge hit of that particular session. It was a huge hit. And everybody, after the session, everybody started coming on the stage. This was in an open park in Bosnia, it happened. So they made a stage in Bosnia in an open park. So the whole the crowd gathered on the stage, and they were acknowledging me, giving handshake, and said the session was very nice, this and that. And I was watching Patri Sir was sitting there on the stage, and not much attention was given to him. I felt little bad.
And then after the program, we both were walking. It was winter, cold winter in Bosnia. So we were walking back to our room, and he was very silent. I was also silent, just quietly walking next to each other. And I was like, I don't know what to say. Either he's upset with me, he's angry with me. So I was thinking like that, and then I was walking. And after 20 minutes of walk, 20 minutes pin drop silence. After 20 minutes of walk, suddenly with such a loud voice, he said, your session was very good. You did a very good job. I said, oh, okay. Thank you, sir. Then I said, sir, actually, whatever I spoke is I copied from you. Whatever I spoke is I copied from you. And I was feeling a little bad that you are on the stage, and while you are next to me, I'm teaching I copied things from you and I'm teaching that. So I was feeling a little bad about it. Are you angry, or are you upset that I copied the things from you? Are you angry or upset with me? Then immediately he looked at me, he stopped walking, and he looked at me and said, I would have been very angry and upset had you not copied from me. And then he said, you remember this, good things has always good things has to be copied. So I'm very proud of you. So that was very encouraging for me to, it was on one level, I can feel his love. And on one level, he see how pure and what kind of an inspiration, how a teacher should be. Because yesterday I told you, he taught me how to be a good student and also how to be a good teacher. So he was really a good inspiration to me in that moment, that anything good we have to learn it quickly. We have to copy, in the sense we have to learn anything good from anybody, from any master. We should learn it. And that is the right thing to do. And there is no copyrights for the truth. Yes, ma'am. सर एक और इंसिडेंट की बात बता रहे हैं। 2017 में बोस्निया की बात बता रहे हैं। वहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर पार्टिसिपेंट्स 40-45 कंट्रीज से आए थे। बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन स्पिरिचुअल मास्टर्स भी आए थे। वो एक पब्लिक इवेंट था, और पत्री सर अपनी ही स्टाइल में वहां पर बोलना शुरू कर दिए, क्योंकि वो वेजिटेरियनिज्म को काफी प्रमोट करते हैं। तो वो किसी चीज के लिए किसी को डांटे थे, और उनके डांटने से कई लोग हॉल छोड़ के चले गए, या जहाँ पे बैठे थे वहां पे से लोग चले गए, और कई लोग अपने मोबाइल में अपने को व्यस्त रखने लग गए। पर पत्री सर को कोई भी सीरियसली नहीं सुन रहा था। जबकि वो इतने अच्छे एनलाइटेंड मास्टर थे, पर लोग उनको सीरियसली नहीं सुन रहे थे। उसके ठीक बाद मेरा सेशन था, मेरा क्रिस्टल मेडिटेशन था। वेस्टर्नर्स लोग बहुत मोहित होते हैं क्रिस्टल के लिए, इसीलिए सब लोग मेरे सेशन के समय में मुझसे सुनने और क्रिस्टल मेडिटेशन के लिए आए, और पूरा गैदरिंग अच्छी हो गई, भीड़ जमा हो गई। मैंने आना-पाना-सती मेडिटेशन, लॉ ऑफ कर्मा और क्रिस्टल गेजिंग का तरीका उनको बताया। पत्री सर स्टेज में ही बैठे थे, और मैं जब बोल रहा था तब सभी लोग मुझे सीरियसली सुन रहे थे, और बहुत अच्छे से सब कोई मेडिटेशन वगैरह सब करे थे। जब पत्री सर बोल रहे थे तब उन्होंने सीरियसली नहीं सुना, पर मेरे सेशन को उन्होंने इतना अच्छे से सुन रहे थे, तो उसके कारण मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं पत्री सर की ही टीचिंग को उनके सामने बोल रहा हूँ, पर मैं एक अलग अंदाज में बोल रहा हूँ, एक साइंटिफिक और जेंटली वे में बोल रहा हूँ, और इसके कारण मुझे शायद इन लोग सुन रहे हैं। मेरा प्रोग्राम बहुत ह्यूज हिट हुआ, बहुत बड़ा हिट हुआ। वो एक बोस्निया का ओपन पार्ट था, पर जैसे मेरा सेशन खत्म हुआ, सभी लोग स्टेज में चढ़कर मुझे बधाई देने लग गए हैं और मुझे थैंक्स बोलने लग गए। मुझे तब भी खराब लग रहा था, क्योंकि पत्री सर को उस समय भी उनको उतना नहीं पूछ रहे थे। फिर हम लोग रूम में चले जाने लग गए। हम काफी देर वॉक भी कर रहे थे, पर हम दोनों चुप थे, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बोले। मुझे बार बार लग रहा था कि क्या सर मेरे से गुस्सा है, क्योंकि मैंने जो भी टीचिंग बोला था उन्हीं की सिखाई हुई चीजों को ही कॉपी करके बोला था। और
आखिर में पत्री सर ने खुद ही कहा 20 मिनट के बाद कि तुम्हारा सेशन बहुत अच्छा था, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने सर से पूछा कि मैंने आपको ही कॉपी करके बोला है, तो इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, क्या आप मेरे से गुस्सा हैं या आप मेरे से नाराज हैं? तो पत्री सर चलना बंद करके मेरी आंखों में झांक कर बोले और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं, नहीं नाराज हूं, अच्छी चीजों को हमेशा कॉपी करना चाहिए। उस समय मुझे लगा कि एक स्तर पर तो उनका प्यार दिख रहा है और दूसरे स्तर पर No, he said I would have been angry if you had not copied me. अच्छा, वो क्षण मिस हो गया। सर ने उनको बोला कि अगर तुम मुझे कॉपी नहीं किए होते तो मैं तुमसे नाराज होता। और एक लेवल पे मेरे को उनका प्यार दिखा और दूसरी लेवल पे मुझे दिखा कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए। वो हम सभी के लिए गुड इंस्पिरेशन है कि कोई भी ट्रुथ, किसी का भी कोई कॉपीराइट नहीं है। जो भी आपको अच्छा सीखने को मिलता है आप उसे सीखिए, उसकी कॉपी करके दूसरों को भी सिखाइए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज सर ने शेयर की। थैंक यू सर। And in a later visit in the same Bosnia only, we were because we did few conferences in 2-3 years. Then in a subsequent visit, he was observing me, because he always he observes me and he tries to make sure that I'm not stuck in any ego. So whenever there is an international conference, and even in Pyramid Valley where there is global congress used to happen, and I used to take a very active part in that program. And sometimes, many people, they praise me, and sometimes I would have got some attention from many people that yes, you did good. So that time Patri sir will be sitting there. So when I pass by him, then they say, hey, everybody says Pradeep down, down, Pradeep down, down. Everybody say down, down. And everybody will say Pradeep down. I was like not understanding. I have done such a good job. Everybody's praising me. But Patri sir is saying Pradeep down, down, Pradeep. It's not understanding. First time, no, it was like, why is he saying like that? And he is not saying down, down. He's making everybody to say that. So, mera ego thoda hurt. But then I pretended that, okay, everything was okay. So I walked away from that place because I couldn't understand what he was saying. Then later on, I realized that, okay, so Patri sir is doing that to make sure that my spiritual ego is not blown up. So the next time he started saying, everybody say Pradeep down, down, sir. Koi zarurat nahi, main khud hi bolunga Pradeep down, down. So then Patri sir laughed at me and said, okay, that's my boy. So he always made sure that I was not stuck in the ego. And even in one of the events in Bosnia, so I was doing something and I was expecting people to appreciate it and acknowledge it. Then he was coming out of the conference room, and he was walking next to me because he can pick up the energy, right? I said, Pradeep, I'll tell you something. We should always do our work and move forward. Don't ask the people how was the program, and don't ask any feedbacks. You should gatam gataha. You should always keep going forward. If you look backwards, then you will not go forward in a greater speed. So never look back and check whether you have done right things or not. You finished gatam. Always move forward. Trust and move forward. Keep moving forward. Then you can do great things. So this advice also, he said. So fundamentally what it means is sometimes we all look for acknowledgements. Sometimes we look for acknowledgement that I have done well. Is it I did justice to my job? So we look for feedbacks and acknowledgements. So he discouraged me. He said, you don't need any feedback. You don't need any acknowledgements. Keep going forward. So in that process, what happens is then you are least bothered about judgments. You are least bothered about criticism. Your focus is only on your work. Yes, madam. Yes, sir. सर उसी विजिट की, बोस्निया की विजिट की ही एक और घटना के बारे में बता रहे थे कि लोग पत्री सर मुझे बहुत ऑब्जर्व करते थे
और वो हमेशा कोशिश करते थे कि मैं कोई भी अहंकार में बिल्कुल भी ना फंसूं। एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी पिरामिड वैली में, मैं जब ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कराता था, बहुत से लोग मेरी प्रशंसा करते थे और मुझे आके शाबाशी देते थे। तो वो कई बार लोगों को कहते थे कि बोलो प्रदीप सर डाउन डाउन, प्रदीप सर डाउन डाउन करके, प्रदीप डाउन डाउन करके। तो मुझे आश्चर्य होता था कि मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, पिरामिड वैली में इतने अच्छे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, फिर मेरे लिए ऐसे सर खुद तो बोलते ही थे पर दूसरों को भी वो प्रमोट करते थे कि बोलो बोलो, तो ऐसा क्यों बोलते हैं। फिर बाद में मुझे समझ में आया कि वो मुझे ईगो से बचाना चाहते थे। और एक बार मैं सिंगापुर में एक बार और ऐसे ही सर बोलने लग गए सब लोगों को प्रदीप डाउन डाउन। तो मैं पत्री सर के पास गया, मैंने कहा सर बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप को संभाल के रख रहा हूँ, मैं अहंकार में नहीं फंसूंगा। तो उन्होंने हंसकर बोला ठीक है मेरे बच्चे, बिल्कुल ऐसा ही मैं चाहता हूँ। नहीं नहीं, नो ऐसे नहीं. I दैट्स said माई पॉइंट। I myself will say Pradeep down down. यस। हाँ तो आप मैं खुद भी बोलूंगा कि प्रदीप डाउन डाउन। तो सर बहुत खुश हुए और बोले कि बिल्कुल दैट्स माय बॉय। तो उनकी कोशिश रही कि मैं अहंकार में नहीं फंसूं, वो सर दिखती है हम लोगों को। और बोस्निया में भी मुझे काफी लोग अप्रिशिएट करते थे, एक्नॉलेज करते थे। तो एक बार कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैं सब लोगों से पूछता था कि कैसा लगा प्रोग्राम, में लोगों की व्यूज जानना चाहता था। तो एक बार वो कॉन्फ्रेंस रूम में आके मेरे बगल में आके खड़े हुए, क्योंकि वो मुझे अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। तो उन्होंने कहा कि कभी भी तुम अपने प्रोग्राम की फीडबैक के लिए या एक्नॉलेजमेंट के लिए किसी से भी मत पूछो, सिर्फ आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो कि तुमने कैसा काम किया, अच्छा किया बुरा किया जो भी है, अच्छे से आगे बढ़ते जाओ, तभी महान चीजें कर पाओगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम फीडबैक चाहते हैं, कुछ एक्नॉलेज चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर फीडबैक नहीं चाहोगे, एक्नॉलेज नहीं होना चाहोगे, तो अपने जजमेंट और क्रिटिसाइज से दूर रहोगे। I can keep on saying so many days, so many things are there. I can maybe 10 days, 20 days also is not sufficient. There's so many instances. Then there was another important moment where we both were traveling in car from Hyderabad to another place when I came to India. So we both were traveling in the car from Hyderabad, Kartal Pyramid. We're traveling to a nearby town. So again, he was in a very good mood, and so I wanted to see. By the time I already know my Janma Parampara, I realized my Janma Parampara, that in my past life, my immediate past life, I was a student of Babaji. I was working with Babaji. Then in that previous lifetime, I was working with Master Kutumi. And then in the previous lifetimes, I was with Himalayan yogis. So in different lifetimes, I worked with different masters from different lineage. So I wanted to ask Patri sir about the lineage, the Guru lineage. So I asked him, sir, in my past lives, I was with the Babaji's lineage. I was with Master Kutumi lineage. I was with the Christ consciousness lineage. And now in this lifetime, I'm with you, and PSSM is mostly Buddha's lineage. So in this lifetime, I'm in this Buddha's lineage. So can you share something about this Guru lineage? I want to know that different lifetimes I've been with different gurus, and in this lifetime, I'm with in the Buddha's lineage with you. So can you say something about it? So then he said, the word guru is outdated. The word guru is outdated. You replace the word guru with expert. Then you will understand. You go to a mathematics expert to learn mathematics. You go to a chemistry expert to learn chemistry. Similarly, in each lifetime, you go to a certain expert to learn their expertise. So just replace. Every master has certain expertise.
And every lineage has certain expertise. So if you replace the word guru with an expert, then you will understand. So this was also very enlightening, because his emphasis was on the detachment. He spoke the word guru is outdated. It doesn't hold, he said it is outdated, it doesn't hold any significance. Guru ka, guru lineage ka. So it's just we are learning, expert. So then what happens? There is no emotional dependency. We go to a teacher, we learn from the teacher, we thank the teacher, there is gratitude. That's it. There is no bondage. So as such, I don't have any bondage in this lifetime because I learned this lesson. But the clarity was crystal clear. Amen. सर बता रहे हैं कि एक बार वो हैदराबाद से करताल कार में ट्रैवल करते हुए पत्री सर के साथ जा रहे थे। बहुत अच्छे मूड में थे सर, और प्रदीप सर को जन्म परंपरा की इच्छा हुई अपने जानने की, क्योंकि वो अपने पिछले जन्म में एक जन्म में बाबा जी महाता और बाबा जी के शिष्य रहे हैं, एक जन्म में कुटुंबी गुरु के शिष्य रहे हैं, एक जन्म में वो हिमालयन गुरु के भी शिष्य रहे हैं। तो वो इस जन्म में चूंकि पत्री सर के साथ जुड़े थे, तो वो जानना चाह रहे थे कि क्योंकि PSSM बुद्धा शिक्षाओं को मानता है, बुद्धा की शिक्षा को मानता है, तो पत्री सर से उन्होंने पूछा कि मैं अपने कौन से गुरु के से मैं कनेक्टेड हूँ, कि मैं क्या क्राइस्ट के शिक्षा को करूं या कुटुंबी या बुद्धा। तो ये मेरी जन्म परंपरा के अनुसार मुझे बताइए कि मैं कौन सी शिक्षाओं के साथ जुड़ा हूँ। तो पत्री सर ने बोले that was not my question. I told Patri sir that I know that I have had many lifetimes with other lineages, but in this lifetime I have been with you. So you are associated with the Buddha lineage. So can you share something about this lineage and my journey in this lifetime with you? So I was asking, can you share something about me being a student with you in this Buddha lineage? I want to hear from you what is this current lineage, because past lives I know, so I want to know more about the current life. तो क्योंकि कई जन्मों के वो अपने गुरु को के बारे में जानते थे, तो इस बार जब पत्री सर के साथ है और बुद्धा की टीचिंग्स PSSM में स्प्रेड की जाती है, तो इसीलिए इस जन्म में उनका साथ पूछने के लिए सर ने क्वेश्चन किया। तो पत्री सर ने कहा कि गुरु एक आउटडेटेड वर्ड है और कोई भी महत्व नहीं रह गया है इसका। आप गुरु के बदले एक नया वर्ड यूज करो, एक्सपर्ट्स, जिसको हम हिंदी में प्रशिक्षक नहीं, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। एक्सपर्ट मतलब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, प्रशिक्षु कुछ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई गणित को सीखने जाना है तो गणित के मास्टर के पास जाएगा, केमिस्ट्री का सीखने जाना है तो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट के पास जाएगा, ऐसे ही गुरु भी एक किसी विशेष शिक्षाओं में एक्सपर्ट है। तो ये बहुत ही एनलाइटनिंग स्टेटमेंट था सर का, क्योंकि वो गुरु से ही वो डिटैचमेंट होना सिखा रहे हैं कि जिससे भी आप कुछ सीख रहे हो तो उनसे आप सीखिए, उस पर कोई इमोशनल डिपेंडेंसी मत बनाइए, ताकि आपका और गुरु का जो भी जिससे आप सीख रहे हो कोई बीच में बंधन नहीं रहे। तो इस जन्म में मैं ये इनसे सीखा। And also sometimes we read many books, and different books says different things. Sometimes we get confused. Sometimes some masters, some authors, they say, for example, the soul. This is also one of my questions to him. So when I think we were in Pyramid Valley, we both were reading books. So whenever I go visit him and spend time with him, he'll normally give a book to me. He will be reading a book and he will give a book to me and said, okay, sit, let's read together, and you read a book. So I was reading some book and then I asked this question, sir, different books, sometimes some concepts, different authors, they write it in a different way. Sometimes it is conflicting information. For example, some authors says the soul enters the mother's womb in the 3rd month. Sometimes the soul enters the mother's womb in the 6th month.
Some authors, they say the soul enters only after the baby is born. So alag-alag masters, alag-alag information that there. So then how to interpret and how to deal with this kind of thing? Then Patri sir said that is the time we should always have a question mark. I said, can you explain, sir? So there are many things which we don't know. Different people share, different authors, they write according to their point of view. But whenever you read something and whenever there is a conflicting information, don't conclude the things. It is very important you don't conclude. If you conclude that you know everything, then you are wrong. So always have a question mark. In the right time, the right things will be revealed to you. So always have a question mark and never conclude the things. So that's one thing which is very important for all the book readers, where you don't conclude. Some things you don't understand, or there is some conflicting thing. Just have a question mark. Don't conclude it and move forward. That's also it's very important. सर बता रहे हैं कि कई बार हम लोग मुझे पत्री सर बुक्स देते थे पढ़ने के लिए, और कई बार हम लोग सभी लोग जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही पिरामिड वैली में मैं उनके साथ ही बैठ के बुक्स पढ़ रहा था और मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, क्योंकि एक क्वेश्चन था जो कई बुक्स में अलग अलग उसके आंसर लिखे हुए थे, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट विवादास्पद रहते हैं। तो मैंने सर से पूछा कि कई ऑथर लोग कहते हैं, कई मास्टर्स लोग लिखते हैं कि आत्मा गर्भ में 3रे महीने में आती है, कई जगह लिखते हैं कि 6वें महीने में गर्भ में प्रवेश करती है, और कई लोग कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तब आत्मा प्रवेश करती है। तो सही आंसर क्या है, तो आप मुझे बताइए। तो पत्री सर ने कहा कि कई चीजें हम नहीं जान सकते, और अगर आपको कोई भी चीजें विवादास्पद लग रही हैं तो आप ये मत सोचिए कि ये सही है अब इसके बाद खत्म। कभी भी कंक्लूड मतलब अंतिम निर्णय मत लीजिए, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। सही चीजें आपको सही टाइम में मालूम चल जाएंगी, और ओपन माइंड से ही रहना चाहिए। तो वही सर कह रहे हैं कि कई बार हम लोग कई बुक्स पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मास्टर ने ये कहा, दूसरे मास्टर ने दूसरा कहा। तो हर एक मास्टर अपने अनुसार लिख रहा है और अलग अलग एंगल होते हैं सत्य के भी। सर ने अपनी बुक के टाइम में भी मुझे बताया था ये वाली बात। तो आप ओपन माइंड से ही रहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस बढ़ते जाएगा, आपका राइट टाइम आते जाएगा, आपको और उसमें चीजें ऐड होते जाएंगी और सत्य आपको मिलता जाएगा। And on another occasion, we were in the hub in Egypt. It was the border. It was the border of Saudi Arabia. It was a nice resort with a beach. So we were sitting in front of the beach resort. The waves were almost coming and touching us. So we were discussing a lot of things about. He was sharing about his journey, when he started, how he started with one person. And in those days, like, he used to find people, he used to give chocolates to the people. I say, you come, I'll teach you meditation, I'll give you chocolates. Or he will see some people who is smoking and say, I will buy you cigarettes. You come and are you interested to learn meditation? I will buy you cigarettes for you. So he used to motivate in the beginning days to find one person to teach meditation. And so like that, he always had the faith, and he always never doubted. He never doubted. He always had the faith. He always trusted, and he moved forward. And he was giving that example to me, and he was saying that is the way you should go forward also. No matter what comes in your way, you should always have faith and move forward. So he was motivating when he was sharing his examples, how you take one step forward. He was giving his own examples of all the miracles which happened in his life. When he started teaching meditation, there were so many miracles which happened to him. And there were people from nowhere, from Himalayas, they would knock his door in Kurnool and say, oh, we came here to learn meditation. I said, okay, how do you come to know about me? I said, oh, we were in Himalayas, and there was a guru there, an enlightened master there. So we were his disciples, or we met them, we wanted to meet him.
and we asked for Gyan and initiation. So they said, you go to South India, there is a person in Kurnool, and you go and this is the address, you go and knock his door. He's the right person to teach you. So that was the beginning days of Patri sir. How does the master sitting in Himalayas know about Patri sir? So it was like Patri sir used to say, it was totally baffling. He was sharing all that magical moments where people randomly people come from nowhere and they come to him, and they used to ask for some meditation and knowledge. And also he said another incident where another person, a foreigner, he came and he knocked his door, and he said, can I stay with you? I said, why you want to stay with me? I said, I got a guidance from a Himalayan yogi that I should stay with you. Can I stay with you? So who is that Himalayan yogis who is sending all these people? And he has no clue about it. And then he said, okay, you can stay. So then he stayed for some time. And after that, he left. And after a month, so he was staying in his Patri sir's home. So he was reading 1 or 2 books. And then he went, suddenly he disappeared. Don't know where he went. Then after a month, he came with a full box of books, like hundreds and hundreds of books, different books from different masters. I said, I'm guided because I know you like to read books. So I'm guided to buy the best spiritual books on the planet Earth. And this is my gift to you because you looked after me very well. So he used to share all those magical moments when we are sitting in that alone time, one-to-one. So he was also simultaneously motivating me that this is how the universe works. When you take one step forward, the whole universe supports you in your journey. And so also in that discussion, I was discussing about some things like, I don't get along with some people. I don't like to work with some people on certain projects. So then he said, Pradeep, it is very important you have the right team with you. Always get the best people to work with you. Okay. But sometimes you don't get along with somebody. But don't close the file. Never close the file. Always keep the file suspended. So never conclude that this person is not suitable and this person is not worth. And don't close the file means don't close your channels, your communication channels with that person. If you don't like that person, you suspend the file. But in a future date, you should be open. So that means never have a definite enmity with anybody. Never close a file. Always keep the file open, suspended, so that you can open it back anytime. So the person keeps changing. The same person might change after 1 year, after 2 years, after 5 years, after 10 years. So you should be open. So never close a file. Always keep the file open and suspended. There will be a time in the future where you might need to revisit the same file. So for that reason, you need to always make sure you never close the file. I mean, never conclude about anybody and never close the chapter with anybody. Always keep it open-ended with anybody you work with. This also something is very, very important, because sometimes out of frustration, out of anger, sometimes we conclude the things about somebody. But it is very important we don't conclude anything about anybody. And if you don't like to work with somebody, it's okay. But we should not close the file. We should always suspend it, so that knowing that in the future date, you will be working together again. बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर ने एक और इंसिडेंट के बारे में बताया है कि इजिप्ट के एक बीच रिसोर्ट में मैं उनके जर्नी के बारे में सुनता था। वो अपने शुरुआती जब पत्री सर शुरुआती में मेडिटेशन सिखाते थे, उस समय की जर्नी वो बता रहे थे कि वो कैसे लोगों को मोटिवेट करते थे। किसी को सिगरेट पीने की इच्छा होती थी तो कहते थे तुम सिगरेट मैं तुमको लाके दूंगा, तुम मेडिटेशन करो, या तुमको जो भी चीज उनको चाहिए रहती थी उनको देखकर मेडिटेशन सिखाते थे। इतनी कठिनाई से वो मोटिवेट कर रहे थे पूरे पृथ्वी पर मेडिटेशन को। और उन्होंने मुझे और भी क्योंकि उनको विश्वास था कि वो आगे बढ़ेंगे,
तो जो भी हमारे साथ परिस्थिति आए, हमें हमेशा मोटिवेट होते रहना चाहिए, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं। वो अपने मिरेकल्स के बारे में भी बताते थे जो उनके साथ घटित हुई थी। कई लोग हिमालय से उनके घर का दरवाजा आके खटखटाते थे, कुत्ते पे बताते थे कि वो हिमालय से आए हैं, और वहां के कोई एनलाइटेंड मास्टर्स ने उनको This was in his very beginning days where he was still working. अच्छा, जॉब में थे तब? हाँ, जब मतलब पत्री सर जब थोड़ा बहुत मेडिटेशन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उस समय कई लोग आते थे उनके घर में और कहते थे कि हमें मेडिटेशन सीखना है, आप हमें ज्ञान और दीक्षा दीजिए। तो सर पूछते थे कि तुम्हें कौन भेजा है, तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? तो वो कहते थे कि एक हिमालय में मास्टर है, एनलाइटेंड मास्टर है, उसने कहा कि आप साउथ इंडिया में जाइए, कर्नूलू में, वहां पर ऐसे ऐसे सर मिलेंगे, वही तुमको मेडिटेशन सिखाएंगे और ज्ञान देंगे। पत्री सर उस समय के बारे में बता रहे थे कि कई बार तो फॉरेनर भी नहीं, तो वहां पे दूर दूर से लोग आके इनसे मेडिटेशन और ज्ञान की बातें लेते थे। एक फॉरेनर भी आया था, उनके घर में दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा कि मैं आपसे गाइडेंस चाहता हूँ और मैं क्या आपके घर में थोड़े दिन रह सकता हूँ? तो पत्री सर ने उनसे भी पूछा कि तुमको किसने भेजा है? तो उसने कहा कि मुझे एक हिमालयन योगी ने आपके घर में भेजा है। पत्री सर ने उनको रुकने दिया और उनकी अच्छे से देखभाल की, और पत्री सर के घर में उन्होंने कुछ बुक्स भी पढ़ी। फिर उसके थोड़े दिनों रहने के बाद वो फॉरेनर अपने घर वापस चला गया, पर 1 महीने के बाद एक बड़ा सा डब्बा लेकर जिसमें सारी बुक्स भरी हुई थी। अचानक वो डिसअपियर हो गया, वो फॉरेनर। ही सडनली लेफ्ट आफ्टर few days. He disappeared. I mean, suddenly he disappeared. He never told anybody. He left the house, and he came back after 1 month with full of books. अच्छा, मुझे लगा कि वो बाय करके गए सर को। No. He suddenly disappeared. अच्छा, तो जो फॉरेनर को रहाए थे सर ने, वो अचानक ही गायब हो गए। और 1 महीने के बाद एक बहुत बड़ा बॉक्स लेकर आए सर के पास, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बुक्स थी, और उसने कहा कि मुझे निर्देशित किया गया है कि मैं आपको ये सारी पूरी पृथ्वी की सबसे बेहतरीन बुक्स लाके दूं। आपने मेरा ख्याल रखा, इसीलिए मैं ये बुक्स के रूप में आपको दे रहा हूँ। तो पत्री सर मुझे समझाते थे कि देखो, ऐसे ब्रह्मांड काम करता है। आप जो भी करना है आप अच्छे से करिए, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। मेरे जीवन में कुछ लोग आए थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और मैं उनके साथ काम करना नहीं चाहता था। तो पत्री सर ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि तुम हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम करो, पर जो तुम्हें पसंद नहीं है या आप जिनको नहीं उनके साथ काम करना चाह रहे हो, तो उनके साथ कोई मित्रता हमेशा के लिए एंड मत कर दो। एक तरीके से उस फाइल को सस्पेंड करके रख दीजिए, मतलब नीचे रख दीजिए। हो सकता है भविष्य में वो तुम्हारे साथ काम करे। तो शत्रुता नहीं करनी है आपको, भले आप उनके साथ अभी काम नहीं करिए। हर इंसान बदलता है, हो सकता है वो 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद सुधर जाए और वो तुम्हारे पास आके काम करना चाहे। तो किसी के लिए भी अपने, एक तरह से हिंदी में हम कह सकते हैं कि किसी के लिए भी अपने घर का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसे लोगों को सस्पेंड करके रख दीजिए। फिर से तुम उस फाइल को रिविजिट, मतलब फिर से आप उसके साथ काम करना शुरू कर सकते हो। और ऐसे ही होना चाहिए। कई बार हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं जिन लोग हमारे अनुसार काम नहीं करते हैं, हमें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, तो हम गुस्से में या नाराजगी में हम हमेशा के लिए उनकी फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो सर उसी के लिए कह रहे हैं कि हर एक कोई बदलने की कैपेसिटी रख सकता है, तो हमेशा मित्रता बना के रखो ताकि कभी भी काम कर सको। थैंक यू। And in one of my visits to India, so I went to Kartal, Hyderabad. So Patri sir was going for a rounds in the Kartal ashram, so I was waiting near his room. So then he was coming back. So I heard that he is coming back. So from the room I came out. I came out to welcome him, to see him and to say hi, because I was coming from overseas. So he saw me from a distance, and there was a group of 50 people who was coming, walking along with him. So he saw me from a distance and he started walking fast, so that he comes faster than the rest of the group. He started walking fast and he came very close to me
and he was started looking into my eye, like, from his forehead was almost touching my forehead. So he was coming this close and looking into my eyes. And I was like, what is this strange behavior? Sometimes Patriji sir will do different kinds of behaviors where you cannot predict what he will do. That is the dynamism he has. He's always dynamic. You can never predict. So that makes you feel alert. In his presence, you always feel alert because he's so dynamic. So he was coming so close and staring into my eyes. And I was like, okay, this is your test. You are a master. Never be scared. Okay, you also stare in his eyes. So I also started staring in his eyes. Then after a few seconds, he said, I want to tell you something. Can I say? Yes, sir, please. What you see through your physical eyes is a Maya. And he said, what people see through their physical eyes is a Maya. And what people see through their third eye is a greater Maya. And these people who are in Maya, they don't know that they are stuck in a greater Maya. They think they are great people. Ayorama, like that. He hit the forehead and he walked away. He walked into his room. So this was, I think this was around in the 2013 something. And then it was very curious and interesting, but what he said is really an amazing fact. Patriji sir always discourages, in front of the people, in the public, he always says, share your experience. And he will encourage. But when you go closer to him in his private moments, he will scold you only. Kya bakwas baat kar raha hai? So also I heard, this was many years ago, I heard from one of my friends who was there in that incident. One day, Patriji sir couldn't attend the meditation program in one of the towns. So he deputed one of the senior masters to go and teach meditation. So this person went, and then he taught meditation, and he came back, and he met Patriji sir. And he said, sir, today's program is super hit, super successful. I said, Acha, okay, good. Sir, today's program, even though you are physically not there, so what I did, I said, we will all invite Patriji sir astrally, and we will do meditation in the presence. So like that, I instructed everybody to astrally call you, and we all did meditation. Such amazing energy, such beautiful energies we got in the meditation. You are actually there with us, sir. Everybody is so happy. And then while he was speaking, that Patriji sir stood up from the bed and big fat on the slab. I say, you idiot. I was telling, my whole life I was teaching everybody, Appo Deepo Bhava, no dependency on any gurus, no dependency on anybody. My whole life I'm teaching, and you are using my name, and you are inviting me only to misguide the people. And he was, itna mara isko us din. Said, never ever do this stupidity, you idiot. Because he said, my whole effort is to have the detachment and be your own master. And you're using my name only, inviting me only, and making the people dependent on me. So this incident was many years ago. Like, in those days, there were not many channelers. Unfortunately, now there are many people who channel, but in those days, he was very strict. He was actually very strict. And even in 2011, he invited me to Vizag Dhyana Jagath. So I came from Australia, landed in Vizag. So he was sitting there on the stage. He asked me to come, and then we both were sitting on the stage, and he was discussing. He was speaking to me. Okay, how was the journey? When did you come? And what's the news in Australia? And all the updates. And as he was speaking, suddenly there was a old woman who came and fell at his feet. He was looking at me and speaking. Suddenly he kicked that old woman, and the woman fell 10 feet apart on the stage. I was a bit scared sitting next to him. Like, kya baap re, ye football khel raha kya? I mean, an old woman, he was kicking. He suddenly kicked.
And then he was scolding, "You useless lady, how many times to tell not to fall at my feet? Don't have any common sense, this, that." He was scolding. And then suddenly he turns at me and says, "Okay, what else?" Suddenly with a smiley face, he looks at me. And I said, "Okay, what else? What else?" I was like totally frozen. Yeah, chal rahe idhar. And it was in a big event, in Vizag. There were about 20,000 people there. And then, see, I was sitting next to him and I know what is happening. Then suddenly some other masters, they came. I said, "Kya ho raha hai? Patri sir, gussa hai, kya ho raha hai?" So other senior masters were asking, "Kya ho raha hai, sir?" Oh, the lady fall at the feet. As he was speaking, there was another person who came and said, "Sir, mujhe bhi ashirwad karo, mujhe bhi kick chahiye." Then he was like so fed up and he looked at me. "Do you see? What do I do with these idiots? What do I do with these people? Now, do you understand me? Do you understand what I'm going through in India?" So then I was like looking at him. I was a bit shocked. I was totally frozen. I was looking at him. Then he scolded that person also. "How many times to tell you? My whole life I'm telling not to fall at my feet, not to fall at my feet." He was scolding. And that person was, "Thank you, Swamiji, your Ashirwad." Like that, he smiled. And then another person coming and falling at the feet. So then he was so pissed off. And he said, "Okay, put a stool in front of me. Now, these people, they are not going to listen. So I will keep my foot on the stool. I will make it available. Everybody, let every idiot, every stupid come and fall at my feet." The moment he said it, a big queue happened. More than 1,000 people were coming and touching his feet. And I was sitting next to him and I was like, he was looking at me. "Dekha? Is stupidity ko dekha?" I said, "Yes, sir. I know you are going through a lot of trouble. This is what it is." Yesterday I was telling you, right? So he announced my past life on the stage and he asked me, "Who asked you to become a guru? Face the consequences." So he was trying to show this is what happens in India. If you take a guru figure, these are the things you have to go through. Okay. So it is very important. See, Patri Sir ka teaching is truth, straight to the truth, that you are your own guru. You are no less than anybody. Okay. So don't fall at anybody's feet. Don't go behind channeling and don't invite any masters. Don't be dependent on anybody. And don't get into illusions of your third eye experiences. Then in a later occasion, he told, the 2 eyes is a Maya. The third eye is also a Maya. The fourth eye, the wisdom eye, that is the true wisdom. That fourth eye gives you the clarity. To have that fourth eye, you need to come out of the third eye. It is very important you close your third eye. Everybody goes through the third eye, but don't get into the Maya. Don't get stuck into the Maya. Close that third eye. Then the wisdom will happen from within you. The intuition will start working. That will give you the clarity. So he was so clear in his teachings. But it is unfortunate people are still stuck in Maya and illusion. So now, since the master is not in the physical body to kick anybody, to correct anybody, so it is important you have to help yourself. Only you can help yourself. And also he gave another concept to me. Apo goto bhava. Apo goto in Telugu, goti means pit. So he said, if only you can help yourself. And also the equally true statement is, only you can fall in your own grave. Only you can fall in your own dump. Only you can fall in your own pit. Nobody can push you. You will only fall on your own. That is also equally true. So normally you hear him teach Apo Dipava, but he told me Apo Goto Bhava is also equally true. So this is very important. If at all we are in some illusion, nobody is responsible. Only we are responsible. If we feel that our life is in a mess,
only we are responsible for that because we have created that mess. We have dig our own grave. Yes, madam. फटाफट मैं बता रही हूँ। इंडिया में एक और इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं कि ये करताल में गए थे, उस समय वो आश्रम में नहीं थे, अपने घर में, तो वो रूम के बाहर में इंतजार कर रहे थे प्रदीप सर, पत्री सर का। फिर किसी ने बताया कि पत्री सर वापस आ गए हैं, तो ये भी अपने रूम से बाहर उनसे मिलने गए। पत्री सर उनसे बहुत दूर में थे, 50 लोगों से घिरे हुए थे, पर जैसे प्रदीप सर को देखा पत्री सर ने, तो वो एकदम फास्ट चलते हुए, दौड़ते हुए लगभग उनके बिल्कुल करीब आ गए, और इतना करीब आ गए कि इन दोनों का सर टकराने वाला था। अब बिल्कुल आंखों में झांक कर उन्होंने कहा, हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। सर बोल रहे थे कि जब भी वो आते हैं तो थोड़े डायनेमिक टाइप के थे। मैं अलर्ट तो था, पर वो मेरे से बहुत पास में आ गए थे और मैं थोड़ा सा डर भी गया, और मेरी आंखों में झांक कर उन्होंने पूछा, कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या जो भी लोग देख रहे हैं, जितने भी पृथ्वी में जैसे लोग देखते हैं अपनी 2 आंखों से, तो वो माया है, और जो लोग थर्ड आई से देखते हैं वो ज्यादा माया में है और अपने आप को स्पेशल समझते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट था जो सर ने मेरे को बोला, क्योंकि वो हमेशा डिस्करेज करते थे थर्ड आई को। अकेले में जब भी पत्री सर के सामने कोई थर्ड आई की बात करता तो तब उनको बिल्कुल डिस्करेज करते थे, पर जब भी कोई ग्रुप में गैदरिंग होती थी तब हमेशा प्रमोट करते, मतलब एनकरेज करते, सर यस यस अपने एक्सपीरियंस बोलो, थर्ड आई का भी हो तब भी सुनते हैं अच्छे से, पर अकेले में उनको पसंद नहीं था। तो एक बार मैंने एक अपने फ्रेंड से सुना था कि एक बार पत्री सर किसी सेशन में नहीं जा पा रहे थे मेडिटेशन क्लास के लिए, तो उन्होंने अपने एक फॉलोवर को भेजा कि जाओ मेरे बदले में जाके मेडिटेशन करा के आ जाओ। तो वो वापस आया और सर को कहने लग गया कि सर आज का बहुत अच्छा रहा मेडिटेशन, सुपर हिट रहा, आप वहां फिजिकली नहीं थे, तो मैंने वहां पे सब लोगों को कहा कि पत्री सर नहीं आ पाए हैं, इसीलिए आप एस्ट्रली पत्री सर को इनवाइट करो। और आपके एस्ट्रली इनविटेशन के बाद इतनी अच्छी एनर्जी थी, इतनी अमेजिंग एनर्जी थी कि सब लोग बहुत खुश हो गए। पत्री सर अपने बिस्तर से उठे और उसको एक जोर से थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी ये समझाते रहा हूं, अपो दीपो भवा, किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो, और तुमने अभी आज जाकर मेरे नाम पर लोगों को मिसगाइड करके आए हो, ऐसा कभी भी मत करना। सर हमेशा डिटैचमेंट सिखाते हैं और अपने ऊपर निर्भर रहने के लिए हमेशा मना करते हैं। उस समय की ये घटना है जब बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे मीडियम्स वगैरह नहीं थे, जैसे आजकल कुछ ज्यादा हो गया है। उस समय की ये घटना बता रहे हैं। फिर एक बार 2011 की बात बता रहे हैं, जब वाइजैक महाचक्रम के लिए पत्री सर ने इनको इनवाइट किया था। ये ऑस्ट्रेलिया से आए थे सर के पास, स्टेज में बैठे थे दोनों जने, और पत्री सर इनसे पूछ रहे थे कि कैसे रही यात्रा और ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या हो रहा है, ये सब बोल रहे थे, पूछ रहे थे। एक बूढ़ी औरत आई और पत्री सर के पैरों पे गिर गई, और पत्री सर ने उसे जोर से धक्का मारा। वो बूढ़ी औरत काफी दूर जाके गिरी, और सर ने उसको चिल्ला के पूछा, चिल्लाकर कहा कि तुम फालतू के मेरे पैरों पे गिरते हो, मेरे पैरों पे मत गिरो, मैंने कई बार तुम लोगों को मना किया है। जब उसने बूढ़ी औरत को पत्री सर ने ऐसा किक मारा था तो मैं बहुत डर गया और मैं बिल्कुल फ्रोजन हो गया था। और उसके तुरंत बाद पत्री सर ने अपना फेस टर्न किया और मुझसे पूछा, हाँ तुम क्या कह रहे थे, क्या हुआ था? सर एकदम नॉर्मल हो गए थे, पर मैं नॉर्मल नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरे सामने उनको बूढ़ी औरत को मारा था। वो एक बहुत बड़ा इवेंट था। उसके बाद भी लोग मास्टर आते जा रहे थे कि सर हमको भी किक मारिए, और इस पत्री सर गुस्सा करते जा रहे हैं, लोग उनके पैरों पे गिर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि हमें भली मारिए पर आशीर्वाद दीजिए। पत्री सर ने प्रदीप सर को कहा कि तुम देखिए, इसीलिए मैं ऐसे काम करता हूँ। सब लोगों को डांटने के बावजूद लोग उनके पैरों पे गिरना बंद नहीं कर रहे थे। तो आखिर में पत्री सर ने कहा कि ठीक है बाबा, तुम लोग नहीं कर रहे हो तो एक काम करो, एक स्टूल ले आओ, मेरे पैर उसके ऊपर रख दो और पैर पढ़ना जिसको पढ़ना है। आश्चर्य की बात की, तुरंत स्टूल आया, पत्री सर ने पैर रखा और एक लंबी कतार बन गई उनके आशीर्वाद को लेने के लिए। तो ऐसे ही होता है कि लोग अपने गुरु के कदमों पे गिरना चाहते हैं। और पत्री सर ने कहा कि अब तुम समझ गए कि ये इंडिया में ये सब क्यों होता है और इसके कारण मैं कितना दुखी हूं।
उस समय में इतने पास्ट लाइफ और चैनलिंग वगैरह, इल्यूजन्स वगैरह के बारे में बातें नहीं होती थी। और जो सर ने कहा कि दो आंखों से जो भी लोग देखते हैं, मतलब पृथ्वी में जितने लोग भी, एक सामान्य प्राणी जो भी दो आंखों से दिखता है वो माया है, जो थर्ड आई से दिखता है वो ज्यादा माया है। उस थर्ड आई के बियॉन्ड जाके हमको अपनी फोर्थ आई अर्थात विजडम आई को खोलना है। जब विजडम आई खुलेगी तो आपको सत्य का ज्ञान होगा, आपको इंट्यूशन से आपको हर चीज में क्लैरिटी आएगी और आप माया में कभी भी नहीं फंसोगे। तो सर जिस तरीके से अभी शरीर में नहीं है, पर वो जो शिक्षा देके गए हैं उसके कारण आप लोग समझिए कि सर ने सिर्फ अपो दीपो भव ही नहीं सिखाया है, अपो गोथो भव भी हमें सिखाया है। अर्थात अगर हम अपने आप को रोशन करना चाहे, लाइट करना चाहे, तो अपने आप को दीपक बन के Apo Goto Baba is something he told me personally, not to me. हाँ, तो वो नहीं सर, तो सर अब मैं तो आप ही की टीचिंग बता रही हूँ ना। हाँ, कि आपको दीपो भवा वो सबको बताया, पर पत्री सर ने प्रदीप सर को कहा है आपको गोथो भवा, कि अगर हम जिस तरीके से अपने आप को रोशन कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, वैसे ही हम अपने गलत कामों से अपने आप को गड्ढे में भी गिरा सकते हैं। अगर आप अच्छे से प्रयास करते हैं, अच्छा बढ़ते हैं, तो वो आपका क्रेडिट है। अगर आप इल्यूजन्स में फंसते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में गड़बड़ करते हैं, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही और आप हैं। थैंक यू सर। Okay, so this Apo Goto Baba came when last year when you guys came for the retreat, because Patri sir हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, पिरामिड वैली आओ मेरे साथ रहो, because that time Patri sir was taking a lot of rest and I was traveling. See, our relationship, myself and Patri sir, like, was I tried to go far away from him and he tried to capture me. So it was a bit peculiar because I know he taught Apo Deepa, you do your own meditation, and what is the need of to go to a guru? So I always avoided. But there was also equally pull that I should go and visit him once in a while and just say hi, bye, and come. So I was trying to travel around India, and he was staying there in Pyramid Valley, and I was doing online sessions. He was coming, like, come to Pyramid Valley, stay with me. I know if I go there, he will make me stay there and get locked. And I want to have my own freedom. Sometimes Patri Sir's energy is so vibrant. If you are with him, then you should be alert all the time. You should be all the time alert. And once I invited him to Singapore to say, sir, come and stay with me for a few days. So then I said, nobody, only you. So I went to India and I brought him, and he stayed here for 4 days alone, no secretaries, nothing. So it was myself, Patri sir, and Navneet, we three were there just to have some relaxed time. And also we just arranged a 1 hour session in Singapore. The rest of the time is for rest. So in that 3 days, he made me go round and round and round. I wanted to give him rest, but he didn't give me rest for even 1 hour. He was making me go round. So before he came to Singapore, I planned because I know he likes to cook and he likes vegetables. So I went all the shopping and I made sure there is sufficient vegetables, morning, afternoon, dinner, 2 times. So I purchased some 10, 15 vegetables and stocked up in the fridge so that, there is no need to go to the market when he's there. So as soon as he came and he said, okay, what's there what vegetables are there? Sir, sir, lot of things are there. Okay, let me see. He went to the fridge, opened. Oh, okay, you have this, you have this, you have this, you have this. Okay, chalo, let's start cooking. He cooked all the vegetables in 1 day. All the vegetables he cooked, he started, go on, keeping on cooking. Okay, eat this. This is nice. So within, I think 1 day, morning, afternoon, dinner, 3 meals, mein sab vegetables khatam ho gaya. And he was like, oh, this will be very tasty. So he was cooking and he was feeding us. He was cooking and he was feeding us. And then the next day, no more vegetables. I was like, sir, ab pura khatam kiya. Maine ek hafte ke liye plan kiya. Ab ek din mein khatam kiya. Abhi hum, no, yes, you have to go. So again, I have to go to the market. I buy. Again, he finishes off. Again, I have to go.
So it was a very interesting how, because I thought that trip will be very relaxing. I can normally whenever I meet Patri sir, it's mostly in the resorts in the overseas countries. So it is a very casual and very relaxed. I thought I will have that kind of an atmosphere. But in that 4 days, he made me go round and round, and also he was doing book corrections. And he said, okay, I need this printout, I need that printout. So, I mean, he is such a dynamic person where in that 3-4 days, I saw literally how much hard work he does. From morning till night, he was constantly, either he was correcting the book, he didn't watch any TVs or movies. He was either correcting the books, or he was reading the books, or he was in cooking. One meal after another meal, one dish after. Okay, this vegetable can be cooked this way also. I'll show you. Do you know that? Okay. So then he said, I don't know how to cook sambar, but other things I will cook. Sir, I know, sir, how to cook sambar. Really? Can you cook sambar? I cooked sambar in UK. It was a big flop. So I don't want to cook again. No, sir, I will cook for you. Really? Okay, I will see. So then I cooked the sambar. He was coming and watching. What? You put tomatoes before? Sir, this is the way I cook. You please give me some space. So I cooked the sambar and then said, wow, sambar is tasty. What powder you used? This is MTR. See, that's why it got flopped in UK. The UK people are stupid people. They don't know how to bring a nice sambar powder. So or else I would have got hit there only. So now I know how to cook. So then the next time once he started cooking sambar also. So it was more fun, with him, he's such a dynamic person where there is a lot of fun, a lot of energy and a lot of learning and a lot of alertness, awareness. Because I thought I have done all the marketing and all the shopping is done, I can relax. So he can read my mind. Oh, you thought that way? I will shift. I will turn the tables around. So we always had this kind of a playful moment, which is very, very memorable. And if I recollect Patri sir, it is all these beautiful memories which cherishes me. And I told you about the first question which I asked him. I'll tell you about the last question I asked in this lifetime. It was in Pyramid Valley. Right? So the first visit, he was taking rest. I know that he's healthy. If he take rest, he will be all right. So after that, there was the second visit. I came back to Singapore, and then again I went to India. So then he was there. So the second visit, he was very weak. So I saw him, he was really weak. And by the time there were different things going around. And so I went to sir and I said, sir, you are very tired, you take rest. Because that's the day I also landed in Pyramid Valley. So he came 2 hours later to Pyramid Valley. So I was there welcoming him in his pagoda. So the first day I said, sir, you look very tired, so you take rest. So the next day, after 2 days, I went and so he was sitting alone. So then I went and I was looking into his eyes. Then I said, sir, I want to hear from you. I want to hear from your words. What's happening to you? So he just kept quiet for a few seconds. And then he said, even his words were not clear. So he was trying to speak. He said, I'm going through a period of silence. I'm going through a period of silence. That's all I know. So then I said, okay, do you feel bad that you have to stay in one place? Because he likes to travel. He cannot stay in one place. Do you feel bad that you cannot travel and you are sitting in one place? Do you feel bad? How you feel? He said, I'm not sad. I'm not sad sitting in one place because I'm resting. I'm resting and I'm happily resting. I'm not sad. I'm sitting in one place. But I'm very happy the work is going on. I'm very happy the teachings are going on. Like you, like other masters, you're all teaching. So I'm happy that you have all started teaching and I don't need to do anything. So I'm very happy about it. Because that was the time I was doing a lot of online programs, 21 days ka sequence.
Tamil में, Hindi में, कुछ अलग-अलग languages में I was doing. So he used to watch that program from his YouTube channel. So he said, I'm so happy that this work is going on, like you and other masters are teaching. I'm very happy for that, but I'm not sad because I'm resting. So this was my last conversation in this lifetime. And after that, I didn't ask any questions because I know that he's going through something, and I respect his free will. I was not concerned about it or anything because I know he's an avatar. He's enlightened master. I know. So there are many things we don't understand about him. So it's better not to analyze the things and to just accept, right? And I stayed in Pyramid Valley, and I was leaving Pyramid Valley, coming back to Singapore. I was leaving. It was before Buddha Purnima, two days before Buddha Purnima. Normally, because I told you, right, the incident which happened to me in Dhyana Jagath, where he made me popular with the crystal and with the past life. So from that moment onwards, I avoid all the gatherings, all the Dhyana Chakrams. I skip any gathering, anybody invite in India, I avoid. So Buddha Purnima also, I know many people are coming. So I wanted to avoid that and I wanted to leave. So I was there for 3 months with him. Like I was there in Pyramid Valley for 3 months, and he was also there. And we used to go sit some time, play chess, and most of the time we play chess and just give some company to him. And so I told him, sir, I'm leaving, and my car is waiting outside. So I'm about to leave, all packed. My car is waiting outside. I said, okay, sir, I'm leaving now. It's time for me to leave. And I have to go to Singapore, and I have to go to Bali, Indonesia, Malaysia. I have some work. I'll go and I'll come back. So then normally whenever I say, okay, I'm going, bye-bye, he always says bye. When somebody is going and the car is waiting, he always says bye-bye. But I was, to my surprise, he heard me. He was looking deep into my eyes, and he didn't say bye. He said, come play chess with me. Like a bit strange, because Patri sir never says, when you are leaving and when your car is waiting outside, he never does that. So he said, okay, sit, let's play a game. It's like, play a game? I was a bit surprised. Play a game? I didn't understand. I said, okay, chalo, fine. Let's play. So played one game, went on for 1 hour. Okay, sir, I'll leave, one more game. So again, one more game. So went on for 4 hours. For 4 hours, I was sitting with him and playing, and he's not leaving. And then said, 3 games ho gaya. Normally, when me and Patri sir play, it is best of 3, always. So out of the 3, who wins the most is the winner. Best of 3 or best of 5, something like that. So sir, 3 games ho gaya. So now we know we have finished the game. No, one more game. So then with great heart, I said, no sir, it is getting dark. It is really getting dark. I need to go to Tamil Nadu ashram. I told them that I'm visiting them. So I need to go. So please allow me to go. Then he said, okay, acha baba, go, bye-bye. So that was the last I saw in this lifetime. He was a real good friend. Okay, Neetaji. भी थोड़ी इमोशनल हो गए हैं. मेरा पत्री सर के साथ ऐसा संबंध था कि मैं उनसे दूर दूर भागने की कोशिश करता था, पर वो मुझे अपने नजदीक रखना चाहते थे. मैं जब जानता हूँ कि उनकी टीचिंग सबको दीपो भव है, तो मैं उनसे दूर ही रह के काम करना चाहता था. पर जितना मैं दूर रहने की कोशिश करता था, उनकी एनर्जी मुझे अपनी तरफ खींचती थी. मैं सिर्फ उनको हाय और बाय ही करने जाता था. इंडिया में मैं बहुत जगह घूमा, बहुत जगह सेशन लिया,
मैं उनके पास इसलिए जाना नहीं चाहता था कि मुझे लगता था कि वो मुझे बंद कर लेंगे, अपने आसपास ही मुझे रहने के लिए मजबूर कर देंगे। उनकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट थी, हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था। एक बार मैंने उनको सिंगापुर बुलाया था। जब भी आते थे तो वो अपने सेक्रेटरी वगैरह के साथ आते थे और रिसोर्ट वगैरह में मैं उनके रहने का बंदोबस्त करता था। पर इस बार मैंने उनके रिलैक्स होने के लिए अपने घर में ही बंदोबस्त किया था। सिर्फ एक ही सेशन था सिंगापुर में, बाकी 3 दिन वो मेरे साथ मेरे घर में ही रहते। तो उनके आने के पहले मैंने बहुत सारी सब्जियां जाके 10-15 तरीके की सब्जियां लाके मार्केट से लाके रख दी कि हम आराम से रहेंगे और 3-4 दिन का खाना पूरा हो जाएगा। पर वो मुझे घुमाने के चक्कर में थे। एक ही दिन में उन्होंने सारी सब्जियां बना दी और वो इतनी सब्जियां बनाए अलग अलग तरीके से कि हमने तीनों मील में वही सब्जियां खाया। दूसरे दिन फिर खड़े होकर कहने लगे कि फ्रिज में सब्जी नहीं है। मैंने कहा मैं लाया था सर पूरे हफ्ते भर की, पर आपने एक ही दिन में उसे खत्म कर दी। वो मुझे पूरे दिन यहाँ से वहां दौड़ाते रहे, न खुद आराम किए न मुझे आराम करने दिया। वो कभी बुक लिखते, वो बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी थे, कभी वो बुक लिखते थे, कभी टीवी देखते थे, कभी बुक का करेक्शन करते थे, कुछ प्रिंटिंग का भी काम था वो भी मुझे देते थे, कभी कुकिंग करते थे। बहुत तरह तरह से मुझे उन्होंने यहाँ से वहां दौड़ाया। एक दिन उसी समय में से उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें सांभर बनाना आता है प्रदीप सर को? तो पत्री सर को उन्होंने कहा यस। तो बोले ठीक है बनाओ। फिर सर ने बनाया और उससे पूछने लगे कि अरे तुम टमाटर पहले डालते हो? फिर जब मैं सांभर अगर बना लिया तो बोले कि तुम क्या डाले हो इसमें? तो उन्होंने कहा मैं MDR का मसाला डाला हूँ। तो बोले अच्छा तभी तुम यूके वाले लोगों को नहीं आता है बनाना, मैं तुम लोग को अगली बार बना के दिखाऊंगा। और इस तरीके से वो रीड कर लेते थे माइंड। जैसे मैंने 3 दिन का बंदोबस्त करके रखा था, पर वो मेरे साथ एक गेम की तरीके से खेल रहे थे। मैं जब भी उनकी यादों को याद करता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। आखिरी क्वेश्चन मैंने पिरामिड वैली में पूछा, वो रेस्ट कर रहे थे और मैं उनके पास मिलने गया। वो काफी वीक लग रहे थे और मैंने कहा कि सर आप बहुत टायर्ड लग रहे हैं, आप रेस्ट करिए, क्योंकि वो फ्लाइट में 2 घंटे बाद आए थे मेरे से। तो मैं उनको वेलकम करने गया तो मैंने उनको कहा मेरे गले में कुछ और हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर 2 दिन के बाद मैं उनसे मिलने के लिए गया और वो चुप थे। फिर मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी। मैंने कहा कि सर आप कुछ कहें, आपके साथ मैं कुछ सुनना चाहता हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी एक साइलेंस के पीरियड में हूँ, मतलब मौन के पीरियड में हूँ, इतना ही मैं जानता हूँ। फिर मैंने कहा कि कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा, आप एक ही जगह पे हो? क्योंकि उनको ट्रैवल पसंद था, वो पिरामिड वैली में ही आराम कर रहे थे। तो क्या आपको बुरा नहीं लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं उदास नहीं हूँ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सभी मास्टर्स काम कर रहे हैं। क्योंकि सभी मास्टर्स काम कर रहे हैं और मैं रेस्ट कर रहा हूँ। फिर मैंने कुछ नहीं पूछा, ये उनकी फ्री विल थी। एनलाइटेड मास्टर्स थे, हमको उनकी डेथ को एनालाइज नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक्सेप्ट करना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के समय में अक्सर मैं भीड़ भाड़ से दूर रहता हूँ, तो मैं बुद्ध पूर्णिमा के 2 दिन पहले उनसे आखिरी बार मिलने गया। मैंने उनको कहा कि सर मैं जा रहा हूँ, मेरी कार बाहर खड़ी है, क्योंकि मुझे सिंगापुर लौटना था, फिर उसके बाद मलेशिया वगैरह। तो मैं उनको बाय करने के लिए गया था। 25 में उनको जबरदस्ती चेस खेलने के लिए कहा, जबकि उनकी कार बाहर खड़ी थी, पर फिर भी उन्होंने चेस खेला। अक्सर चेस 3 राउंड में खेलते हैं, पर उस दिन चौथा गेम भी सर ने कहा फिर से खेलने के लिए। प्रदीप सर ने कहा कि अंधेरा हो रहा है, मुझे जाने दो।
तब सर ने उनको बाय कहा। Yeah. So there were actually many more beautiful moments which I can keep on sharing, but it is very important to understand. It's really very important to understand that if you want enlightenment, then all the tools are in front of you, all the teachings are in front of you. Meditation, reading books, Sajjana Sangatya, and also teaching meditation. What you know, you teach. The more you teach, the more you learn. What I learned in my meditation journey is very little, but what I learned in my teaching journey is greater, much more, 10 times greater I learned while I was teaching. Because the more you teach, the more you learn. You perfect whatever you learned, you will perfect it only when you teach it. So it is very important to be sincere. It's very important to be sincere and serious. Without sincerity, nothing can be achieved. As a truth seeker, as an enlightenment seeker, it is very important that we take the teachings of this PSSM. In other words, the core teachings of Patriji. What Patriji represents? Patriji is equal to Ana-Pana-Sati Meditation, reading books, Sajjana Sangatya, teaching, doing service in whatever way we can do service to others. And finally, the fifth point, come out of all the illusions. Always seek the truth. So if we can remember, Patriji famous 5-finger concepts, all the time he uses 5 fingers. So मुझे 5-finger अभी आया, dynamically अभी आया. Meditation, reading books, Sajjana Sangatya. Third is Sajjana Sangatya. Fourth is teaching meditation. And the fifth is make sure you are never stuck in illusion. Always your goal is enlightenment. So if you can remember these 5 things, then you are never separate from Patriji. You are always with him. You become him. Actually, Patriji is just a name in the physical body, but we are all consciousness. We don't have any identity. When we go to higher worlds, there is no identity. We are all pure energy. So it is important. If you really respect Patriji, then please follow these 5 things. Thank you very much. And we'll meet you again on some other occasion. Namaskar. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा सर ने बताया है। प्रदीप सर ने कहा कि मैं एक शिष्य बन के जितना सीखा हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं टीचर बन के सीखा हूँ। जब भी हम सिखाते हैं तो और ज्यादा सीखते हैं। आप सभी लोगों को जो भी चीज सीखनी है उसको बहुत सिंसियरिटी के साथ सीखिए। और पत्रिजी सर के 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि 5 फिंगर्स कॉन्सेप्ट हमारे आनापानसती मेडिटेशन, बुक रीडिंग, सज्जन सांगत्य, सेवा, और 5वां है इल्यूजन से बाहर आना, किसी भी इल्यूजन पे नहीं फंसना। पत्रिजी सर से हम अलग नहीं है। पत्रिजी सर एक फिजिकल बॉडी में एक चेतना थे, हम सभी चेतना है और हम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल मेडिटेशन में हम मिलेंगे। सेम मीटिंग आईडी, सेम पासवर्ड। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पद्मिनी सिंह ज्ञान भारत में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग 1 घंटे का मेडिटेशन करेंगे। आज कोई भी विजडम शेयरिंग नहीं होगी, तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए। अपनी कमरे की लाइट को धीमा कर दीजिए और पानी पी लीजिए। अपने स्थान पर क्रॉस लेग पोजीशन में फिंगर्स को क्रॉस करके अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें।
सर से पांव तक कहीं भी कोई तनाव न रहे। पैरों की उंगलियां बिल्कुल शिथिल, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, थाइस बिल्कुल रिलैक्स कर दें। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक बिल्कुल रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी सीधी मगर तनाव रहित। कंधे रिलैक्स्ड, दोनों बाजू बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन सीधी, माथे पे तनाव की कोई रेखा नहीं। दोनों भवें बिल्कुल रिलैक्स। आंखें बंद मगर रिलैक्स्ड। जबड़ा, जिह्वा बिल्कुल रिलैक्स कर दे। और अब अपने मन को अपने भीतर ले आए और आती हुई और जाती हुई श्वासों पे टिका दें। भीतर आती श्वास, बाहर जाती श्वास। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
Shloka. Esports Premier League, stop at nothing. 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 Esports Premier League, stop at जीना शान से हमें सीना तान के खड़े सीधा दागते भिड़े जो बिना बात ना लड़े ये है नाम के किलर मैदान में मरे खींचा दाब के ट्रिगर सीधा जान से गए हेडशॉट जो मारूं तो ये बंदे फैले तेरे स्क्वाड पे भारी हम एक अकेले इन्हें खोज के ठोकते जहां भी छिपे हूँ इन सब से कह दो नहीं हमसे खेले भर चलता जब गन तब सब सरपट भागे डर कर डर से हर पल बढ़ता धड़कन कट कर गिरते कितने दुर्जन लड़कर मर गए कितने दर्जन डट कर लड़ते जाते पर हमसे अनबन रखने वालों सबको जमकर मारे भरदम हमको पाना नहीं ताज काफी देख राजा आए बैटल ग्राउंड में एक ही हमसा तू भेड़ मारा जाए तुमसे आगे क्योंकि तुम सबका है एम छोटा उससे आगे जाना जहां हमसे गेम जाना जाए Esports Premier League, stop at nothing. 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 Esports Premier League, stop at फायर करूं सीना तान के ऑप्स को खोज के मारूं मैदान में स्क्वाड आए जो रडार में फट से हिट शॉट हम मारते पक्का निशाना में टॉप है ब्रो ग्रोजा के साथ ऑम है ब्रो मचाल किसी का जो लूट ले हमसे साथ में भाई लोग गेम के प्रो ये स्पीएल टॉप पे ओपी सारे चैट में मार्क करते प्लेस जाते बैटल सीधा मैप पे स्नाइप करूं हिल से कोई न बैठे चैन से पास वाले एनिमीज को किल कर दूं पैन से अब कोई न बचा है किलर हक से बने हम विनर कोई न टिका है सामने तभी मिले चिकन डिनर हम नए हिंदुस्तान से बंदूक रखते तान के जो भी आते सामने हम मार देते जान से Stop at nothing Esports Premier League 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 stop at You know what makes me really sad? Indian business owners are stuck even in a booming economy where many more companies are coming up and becoming $1 billion of worth every century without you.